Assalamu alaikum, and it's the high time to welcome you, and I would definitely love to throw out greetings and welcome to entire family of JK Sports Time. We are live from Khrew Premier League. This is Azad Stadium welcoming you for this all important cricket match. It's Haji 11 taking on KGI Cricket Club, and it will be Haji 11 batting first. Oh, the very first ball. What a delivery from Adil Lapti. That is a Jaffa, absolute Jaffa on that occasion, beating the batsman on that outrage. That was a beautiful delivery, beating him on that occasion. That was a superb channel used by Adil Lapti. Beautiful delivery and beating the batsman, the Lapti out in the middle. Won't be easy for him to carry on from the very first ball. It won't be easy for him to set the tone up. And we'll have to wait and watch. Ball number 2 coming up. Left arm. Adil Lapti starts running away from us. Goes and bows. And look at that one. Pitched in short, dug in short. And almost up to the chest height. And now the leg umpire has warned the bowler, if you bowl the next one of that height, it will be a no ball. So you have to make sure that you won't pitch up that sort of a delivery, which will be cranking up a bit. And on that occasion it was a dot ball. It's none for none. We are in over number 1. This is just the beginning of this all-important cricket match. KGI taking on Haji 11. Haji 11 batting first. Third ball outside the off stump. Wanted to drive that one. Doesn't get to the pitch of the ball. And ball makes its way to the safe hands of the wicketkeeper on that occasion. It's a dot ball. It's none for none. We are in over number 1. 3 dots on the trot for Adil Lapti. The left-hander is unable to offer his shots. And there was a kind of an invitation on that occasion, and he was unable to launch onto that one. He was unable to pounce onto that one. It was outside the off stump. But that dot ball, it's none for none. We are in over number 1. We are halfway down in over number 1, and Adil Lapti continues to bowl. He goes away from us, crosses umpire and bows. And look at that one once again in that corridor of uncertainty. And batsman again trying to hit that one, trying to draw at it, but beaten again. It's 4 dots in a row, and it's a streak of 4 dot balls. We'll have to wait and watch. Is Lefty gonna break the shackles? And we'll have to wait and watch. Is bowler going to bowl the maiden over at the start of the innings? It is just the beginning of this all important cricket match. Next ball from Adil Lapti goes away from us to left-hander. Oh, that's a beauty. Beaten again. And on that occasion, ball moving away and shaping away from the batsman on that occasion. And batsman can't do very much. That's a beauty. That is a wonderful ball from Adil Lapti on that occasion. And batsman can't do very much again. Circumspect and beaten all ends up. It's 5 dots Nazir on the trot. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्वागत सभी व्यूअर्स का जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से। और इस समय 5 रन कुल योग हो चुका है। 5 क्षमा कीजिएगा डॉट गेंदें हो चुकी हैं। अगली गेंद अच्छी गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर उछाल मिलती हुई। हालांकि वहां पर छकाया बल्लेबाज को प्रयास जरूर किया था, लेकिन गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में मेडन ओवर संभवतः समाप्त हुआ। पहला ओवर और बहुत ही शानदार, विश्वसनीय और अच्छी शुरुआत देखने को मिली है वहां पर गेंदबाज द्वारा। और शुरुआती क्षणों में दोनों बल्लेबाजों को आत्मविश्वास और सहजता के साथ बल्लेबाजी करनी होगी। दूसरी ओर जिस प्रकार से आज गेंदबाजी की शुरुआत की है, तो कहीं ना कहीं हर डॉट गेंद जो है एक समस्या खड़ी कर रही है दोनों बल्लेबाजों के लिए। और आने वाले समय में यदि इस प्रकार की गेंदबाजी हो रही है, शानदार तरीके से विकेट टू विकेट आप गेंदबाजी कर रहे हैं, तो आने वाले समय में और भी ज्यादा दिक्कत हो सकती है बल्लेबाजों के लिए। Well, absolutely, you're absolutely right, and they have to make sure that they bowl in the right areas. And it is the high time. Adil Lapti bowled and Madden over, and let's continue from other end. Bowl another Madden, and the batters are going to commit a mistake, believe me, and they can't afford too many dot balls at the start of the innings, and they have to make sure that they break the shackles at the start of the innings. We are going to be in over number 2. It's none for none up to the completion of over number 1, and I would definitely love to welcome all the beloved viewers of JK Sports Time. Be back this way and find out another great game of cricket. KGI taking on Haji 11. Toss won by Haji 11 captain, and he decided to bat first against KGI. We are in over number 2. Ball number 1 coming up. Nazir.
पहला ओवर मेडन समाप्त हुआ है और दूसरे ओवर की शुरुआत राइट आर्म ओवर द विकेट इस शॉट से दौड़ा शुरू किया उनकी ये गेंद। भारत में परिवर्तन, बाप लिया ऑफ स्टंप पर, गेंद को निकाल दिया सीमा रेखा से बाहर। 4 रनों के लिए शुरुआत हो चली है और इस प्रकार से 4 रन खाता खुलता हुआ वहां पर हाजी 11 का। प्रारंभिक जोड़ी बीच मैदान में 4 बगैर नुकसान के। हालांकि ये दूसरा ओवर प्रगति पर है, 1.1 ओवर की गेंदबाजी और अब जाकर रनों की शुरुआत हुई है और वहां पर हाजी 11 द्वारा। Well, that was a wonderful shot. Scack out of the back foot and no need to run for those. 4 of those, in fact, that's a boundary. It's 4 for none. We are in over number 2 and he's underway with that beautiful shot. Next ball to right hander. Oh, that's right! Over the mid-wicket boundary. That's gone all the way for 6. It's a down. What a shot! On middle and leg. Pitched on middle and leg and worked away. Picking that one up, Nazir. Not easy. We are just in over number 2 and the ball number 2. That has been worked away. Stylish. Proper cricketing stroke and that was a tremendous one and that's a nasty blow, I should say, with the bat. That's been absolute wonderful shot and that yielded a 6. They are 10 for the loss of no wicket. We are in over number 2. They're into the double figures, I should say, in over number 2. 2 गेंदें हो चुकी है इस दूसरे ओवर की। पहली गेंद पर 4 रन, दूसरी गेंद पर छक्का, तो 10 रन हो चुका है 1.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद। तेज तरार शुरुआत, हालांकि पहले ओवर में कोई रन नहीं आया था लेकिन इस ओवर में जबरदस्त प्रहार इस समय बल्लेबाजों द्वारा, जिसके चलते 10 रन दोहरे अंकों में पहुंचता हुआ स्कोर बगैर नुकसान के। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करता हुआ और हाजी 11 की टीम इस समय, क्योंकि शुरुआती ओवर में जानते हैं यहां से एक तेज तरार और विश्वसनीय आधारशिला की आवश्यकता है, जिसके चलते उन्होंने बेहतरीन प्रारंभ किया है दोनों शॉट से। Well, absolutely 10 for none. We are in over number 2 and that was an excellent shot and worked away over mid-wicket for 6 and that was really stylish. Copybook, proper cricketing stroke and thanks to this man, right-hander at strike, he whiffed that one in a jiffy and gone for run, 6 of those. It's 10 for none. We are in over number 2 of the match. We'll have to, it is Sohail Khan and we'll have to wait and watch. Right arm over the wicket, a slip in place, back with a point, cover point, short extra cover. Oh, that's a good ball. Lord Line on the occasion and clips that one to Riaz P for no run. It's a dot ball. 10 without any wicket, 10 without loss. We are in over number 2. That was a dot ball, Nazir, after that boundary and that 6, and he fetching 10 of 2 balls and followed up with a dot ball. रियाज पीर है गेंदबाज और हालांकि अच्छी गेंदबाजी, शानदार वापसी की है इस ओवर में, क्योंकि 10 रन वो खर्च चुके हैं, तो ऐसे में एक सटीक और लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करनी होगी। शुरुआती ओवर में बल्लेबाज पर कुछ प्रभावशाली गेंदबाजी करनी होगी यदि इस मुकाबले में अपना प्रभाव छोड़ना चाहते हैं। इस ओवर में अगली बार रियाज पीर की गेंद, बार फिर ऑफ स्टंप पर उड़ता हुआ स्ट्रोक, उस ओर खिलाड़ी, लेकिन गेंद उनकी पहुंच से बाहर और निकल गई सीमा रेखा से बाहर। एक और चौका निकलता हुआ वहां पर बल्ले से, तो चौके के साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ कुल मिलाकर 14 हो चुका है दूसरे ओवर में और 14 रन दूसरे ओवर में बगैर नुकसान के। और इस समय गेंदबाज हालांकि सोहेल गेंदबाज है और क्षमा कीजिएगा बल्लेबाज सोहेल के खाते से ये रन आते हुए और इस समय बीच मैदान में हालांकि एक संघर्षपूर्ण स्थिति चलती हुई दूसरा ओवर पारी का चलता हुआ 14 बगैर नुकसान के। इस ओवर में अगली बार राइट आर्म ओवर द विकेट उनकी ये गेंद, इस बार फिर ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद को खेला, लेकिन उस ओर खिलाड़ी है तैनात, उन्होंने गेंद को फील्ड किया और रन बनने की किसी भी संभावना को समाप्त किया। स्कोर अभी भी टिका हुआ 14 रन दूसरे ओवर में बगैर नुकसान के। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए हाजी 11 की टीम KGI के विरुद्ध। आकर्षक रोमांचक स्थिति और लगातार हमारे व्यूअर्स हमारे साथ बने हुए स्वागत करना चाहेंगे JK स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से। अपना प्यार और विचार देने के लिए आपके सहयोग और समर्थन की जरूरत, और इसी प्रकार से अपना विचार देते रहिए। Well, talking about Haji 11, they got Riaz Ahmed, they got Ishfaq Ahmed, they got Rahil Yunus, they got Rafi Yunus, they got Sohail Khan, they got Azim, and that's a beautiful shot that's gone all the way for 6. And this is the third hit of the fourth hit to be precise of the match, and this is all happening here at the center of Khrew, and this has really been a wonderful batsmanship by the right hand, and Sohail Khan is taking them on. This is another 6. It's 20. He makes 20 with that 6 of that over, and what a wonderful batting underway here at the Sun. And Sohail Khan is taking them on, and KG has to work on the basics at the moment, but this has really been absolute carnage with the bat. What a man he has been with the bat, and he's really taking them on. 2 6s and 2 4s, that means 20 of that over,
And if he manages to carry on with the same pace, and believe me, they're really going to take the match away from the opponent side. But just the beginning of the match and going berserk with the bat, it is something different, and it takes a lot of character to play, and he's showing that, he's displaying that wonderful character with the bat. And we'll have to wait and watch how things will be unfolding. The lefty has been given the ball again after 2 overs. Nazir, it's 20 for the loss of no wicket, but Sohail Khan has been the great prospect with the bat. He's taking them on, and it isn't easy. And Adil bowled that maiden over from other end, and Sohail from other end started going berserk. This is totally contrasting character. First over maiden and second over yielded 20. आदिल लेफ्टी ने ओवर की शुरुआत करते हुए 2 ओवर की समाप्ति 20 बगैर नुकसान के सोहेल के लिए। इस बार अच्छी गेंद और उसको निकाल दिया है, गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। एक और दर्शनीय स्ट्रोक, लगातार इस समय छक्कों और चौकों की बरसात होती हुई। शुरुआती ओवर 2.1 ओवर की गेंदबाजी, 26 रन बगैर नुकसान के हाजी 11 का स्कोर। आदिल लेफ्टी है इस समय गेंदबाज, हालांकि पिछला ओवर उनका बैटर रहा था, लेकिन इस बार उनका स्वागत किया बल्ले से। हालांकि बाएं हाथ का बल्लेबाज और एक दाएं हाथ का बल्लेबाज, एक अच्छा मिश्रण, और बीच मैदान में संघर्ष चलता हुआ बल्ले और गेंद के बीच, जिसके चलते अभी तक का बल्लेबाजी हावी देखने को मिली है। Absolutely, and the very first ball yielded a 6, and that was a wonderful worked away shot, flicked away in the air or backwards, Scarlett for 6. And Asif Lefty is on strike, and Adil Lefty is bowling to Asif Lefty. Right and left hand combination at the crease is making the dream work happen for Haji 11 at the start of the innings. And the two openers would definitely love to prosper, and they're up to fly. They're 26 for none. We are in over number 3. Adil Lefty continues to bowl, and on strike will be Asif Lefty. And Asif Lefty is showing some intent here and is trying to announce himself as early as possible. Next ball, and that one outside the up stump, pitched in short, dug in short, asking to be put away, but batsman once again fluttering and unable to make any sort of contact. And that's a dot ball. That's a good ball. That's a good ploy being used by Adil Lefty, knowing that batsman is playing on those hop trackers, and he's able to work away those hop trackers and hop volleys, and on that occasion he changed it quite a bit and bowled that one outside the off stump, and that one rising almost up to the chest height. Well, we definitely love to thank all the beloved viewers of JK Sports Time, those who are commenting, those who are liking the broadcast, and those who are sharing the broadcast. Thank you. Tanveer, Jangir, John, and Molvi Harris and others, thank you for your love and support. This broadcast is brought to you by Aqua Fenestration, Anthem Sports India, Fashion Fiesta, Real Estate Pampur, Shining Star Pampur, and MHM Multi-Fashion, Branded Store, Agri Clan Magaon. Nazir, 26 isn't a bad start. 26 हो चुका है, हालांकि मात्र 30वां ओवर में प्रगति पर आदिल लेफ्टी है गेंदबाज। आसिफ और मुबशर की जोड़ी इस समय बीच मैदान में प्रारंभ कर चुकी है हाजी 11 द्वारा, और क्या बेहतरीन लाजवाब प्रदर्शन देखने को मिला है। शुरुआती ओवर में आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करनी हुई और सामने वाले चोट से एक बार फिर आदिल लेफ्टी की ये गेंद, अच्छी गेंद इस बार खेलने की कोशिश, हालांकि निचले सिरे पे लगने के बाद वही पास में विकेट कीपर ने उनको फील्ड किया बगैर किसी रन के। 26 तीसरे ओवर में बगैर नुकसान के हाजी 11 और KGI के विरुद्ध ये मुकाबला चलता हुआ आजाद स्टेडियम ख्रू से ख्रू प्रीमियर लीग के अंतर्गत ये सीधा प्रसारण अब तक JK स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से पहुंचता हुआ। तीसरा ओवर मात्र पारी का चलता हुआ और 26 रन बने हैं बगैर नुकसान के। पहला ओवर जो कि आज प्रारंभ की थी गेंदबाजी आदिल लेफ्टी ने मेडिन ओवर फेंका था, उसके बाद अगले ओवर में दूसरे ओवर में 20 रन आए थे, और ये पारी का तीसरा ओवर 26 तीसरे ओवर में बगैर नुकसान के। हाजी 11 की टीम में समय प्रारंभिक जोड़ी बीच मैदान में बल्लेबाजी करती हुई, आसिफ जो कि बाएं हाथ का बल्लेबाज और मुबशर दाएं हाथ का बल्लेबाज, तो एक बाएं हाथ का और एक दाएं हाथ का बल्लेबाज। शुरुआती क्षण मात्र तीसरा ओवर, पहला पावर प्ले प्रगति पर और कुल मिलाकर 26 रन। आदिल लेफ्टी सामने वाले चोट से बाएं हाथ से ओवर द विकेट उनकी ये गेंद बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए जबरदस्त प्रहार बॉलर के सर के ऊपर से, और गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। एक और दर्शनीय स्ट्रोक, और महत्वपूर्ण बात यह है कि मनोहर भाई अभी तक जो 30 रन बने हैं 30 के 30 सिर्फ चौकों और छक्कों से आए। Well, absolutely, they're making sure that they send the ball out of the park time and again, and they don't want to waste time by knocking the ball in the gaps. They want to send the ball out of the park, but this won't help them in the longer run. They have to make sure that they knock the ball in the gaps, and they're stealing singles, and singles can make the dream work happen for their side, and they have to work on the basics at the moment, and it's a high time. Announce themselves and try to knock the ball in the gaps and try to stitch up ownership
by going up to the bowling. Won't work time and again. The way we saw the very first we came as a maiden. So you can understand from that a very instinct, and from that very instant, so you have to work on the basics and try to rotate the striker with those singles, and converting singles into doubles will make things easy for your side. Better is to stick to the basics, not to go up to the bowlers time and again. Just stick to the basics, wait for the bad balls, and whenever you get a bad ball, walk away and whip it and smoke it out of the park. That will mean something special for you guys. मैं आपकी बात से सहमत। 3 ओवर 30 रन बगैर नुकसान के, और पहला परिवर्तन देखने को मिल रहा है। रियाज पीर को वहां पर लगाया गया है गेंदबाजी के लिए, और देखना है वो अपने कप्तान के विश्वास पे खरे उतरते हैं अथवा नहीं, ये देखने वाली बात होगी। छोटा बॉलिंग रनअप, तिरछे बॉलिंग रनअप के साथ क्रीज के कोने से पहली गेंद लेकर रियाज पीर की इस बार फाइटेड गेंद, स्वागत किया, ऊंचा लंबा सोकुस और खिलाड़ी है, और गेंद सीमा रेखा से बाहर, अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा, चौका अथवा छक्का। जी हाँ, 6 रनों का इशारा आता हुआ और छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ है 36। चौथे ओवर में स्वागत किया वहां पर रियाज पीर का 36 बगैर नुकसान के। इस समय केजीआई जो कि गेंदबाजी के मोर्चे पे बनी हुई है टीम, और कुल मिलाकर हाजी 11 की अगर बात करें, ये प्रारंभिक जोड़ी इस समय जबरदस्त प्रहार करती है, बड़े स्कोर की ओर अग्रसर। हालांकि क्रिकेट महान जनताओं का खेल है, आखिरी गेंद तक कुछ कहना संभव नहीं होगा। रियाज पीर की गेंद, और इस बार ऑफिस नंबर जगह मिली 2 खिलाड़ियों के बीच में से, लेकिन शानदार क्षेत्ररक्षण, और निश्चित तौर पर जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो करते रियाज के हाथ में, तब तक पर्याप्त समय था। पहला सिंगल वाले से निकलता हुआ, और कुल योग जा पहुंचा 37 रन चौथे ओवर में बगैर नुकसान के हाजी 11। 37 बगैर नुकसान के, यह है अब तक का लेखा जोखा। मात्र चौथा ओवर प्रगति पर, 2 गेंदें हो चुकी है, 3.2 ओवर की गेंदबाजी। 37 हाजी 11 टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हैं। आजाद स्टेडियम क्रू से यह सीधा प्रसारण जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से आप तक पहुंचता हुआ क्रू प्रीमियर लीग के अंतर्गत एक शानदार, आकर्षक और रोमांचक स्थिति। हालांकि शुरुआत एक क्षण है, और ऐसा माना जा रहा है कि बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा, और इसी मुद्रा में तमाम क्रिकेट के प्रेमी, समर्थक और दीवाने हमारे साथ बने हुए। स्वागत करना चाहेंगे जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से सभी चहीते व्यूअर्स का। रियाज पीर बाएं हाथ के बल्लेबाज आसिफ के लिए उनकी ये गेंद, और इस बार फिर जगह मिली, ऊंचा लंबा स्ट्रोक, और गेंद सीमा रेखा से बाहर। 6 रनों का इशारा, एक और छक्का इस ओवर में आने वाला, दूसरा छक्का, और स्कोर बढ़ता हुआ 43। मात्र 3.3 ओवर की गेंदबाजी, 43 बगैर नुकसान के, और क्या विस्फोटक, तेज तरार और आकर्षक शुरुआत यहां पर मिली है दोनों प्रारंभिक बल्लेबाजों द्वारा। जहां तक का बात करें हाजी 11 की, 43 2 छक्के अब तक इस ओवर में लग चुके हैं, और क्या बेहतरीन लाजवाब प्रदर्शन। हालांकि एक सटीक लाइन और लेंथ के साथ यहां पे कुछ करना होगा गेंदबाज को, देखना है इसमें सक्षम हो पाता है अथवा नहीं। ये गेंद, और इस बार फिर घूम के मारा, और गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई। 6 रनों के लिए एक और छक्का, तीसरा छक्का इस ओवर में लगने वाला, और रियाज पीर समझ नहीं रहे हैं कि किस ओर गेंदबाजी की जाए। क्या आकर्षक विस्फोटक शुरुआत, वहां पर आसिफ लगातार विस्फोटक बल्लेबाजी करते 49 जा पहुंचा है 3.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद बगैर नुकसान के। हाजी 11 की टीम आसिफ सामना करने के लिए रियाज पीर का ये गेंद, और इस बार फिर ऊंचा लंबा स्ट्रोक, और लिख लीजिए सीमा रेखा से बाहर। इस बार गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई 4 रनों के लिए, एक और चौका, और 50 रन पूरे। 3.5 के बाद 53 रन बगैर नुकसान के मनवर। 50 comes up. Absolute carnage. What a batsmanship. Can you believe? It's all happening here at the center. Every bowler is under the serious pump and hammer. And both the batters, Asif and Sohail Khan, are making sure, oh, that's in there. And the first bowler is gone. Thanks to Riaz Pir removing the danger man. Asif lefty has to walk back. And again, commentators curse Nazir. The first bowler is on, much needed breakthrough. They needed that badly, and they got that badly. And in the end, it's Riaz Pir getting the last lap over the Asif lefty there. It's 53 for the loss of 1. We're seeing the back of first batter who's walking back to the pavilion, and that's quite some achievement, I should say. It's a big wicket for KGI. They were under the serious hammer, and they were taken to the cleaners, but all of a sudden they're coming back in this all important cricket match. And what a great batsmanship. Their side must thank this man who set the tone up for a great innings. And let me take you through the comments. It is Beg Mushtaq, Pir Fayaz, Shahid Zahoor and Nasir Dar and others. Thank you for your love and support.
And Nisada writes in, thank you for your love and support. This is Khrew Premier League and we are going live from Azad Cricket Stadium, Khrew, with this great game of cricket, which is a great contest underway here at the centre between the two teams. KGI Cricket Club taking on Haji 11, the very vital toss won by Haji 11 captain, and he decided to bat first in this all important cricket match. It's 53 for the loss of a wicket. We're seeing the back of Asif lefty, and we'll have to wait and watch who's walked in next. And let me tell you that who's the newcomer who just walked in at the crease after the fall of Asif lefty. 53 रन पे पहला झटका लगा है वहां पर हाजी 11 की टीम को, और रियाज पीर को आखिरी गेंद पर वो सफलता मिली थी। हालांकि काफी खर्चीला ओवर साबित हुआ था, लेकिन अंततः उन्होंने उस साझेदारी को तोड़ने में सफलता प्राप्त की। और कुल मिलाकर इस 53 एक विकेट के नुकसान पर 4 ओवर की समाप्ति के बाद पारी का 5वां ओवर लेकर के समाप्ति आदिल लेफ्टी। और देखना है किस प्रकार से आदिल लेफ्टी यहां से गेंदबाजी करेंगे। एक विकेट की खुराक मिली है इस पिछले ओवर में, और एक दबाव की स्थिति बनी है। ऐसे में दोनों गेंदबाजों को दोनों छोर से प्रभावशाली गेंदबाजी करनी होगी। विकेट टू विकेट सटीक लाइन और लेंथ के साथ दिशा और लंबाई पर नियंत्रण रखना होगा दोनों छोर से गेंदबाजों को। 53 एक विकेट के नुकसान पर नए बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके हैं, और मुबशर हालांकि नाबाद हैं अभी भी, और उनके साथ दूसरे बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके हैं। 53 रन 4 ओवर की समाप्ति के बाद एक विकेट के नुकसान पर आदिल लेफ्टी कोटे का तीसरा और कुल मिलाकर पारी का 5वां ओवर। पहली गेंद इस बार ऑफ स्टंप से बाहर लपेटा उसको, हालांकि गेंद की लाइन का पीछा किया। 1 रन पूरा कर रहे दोनों बल्लेबाज, 1 रन के साथ ही संतुष्ट और स्कोर बढ़ता हुआ 54.4.1 के बाद एक विकेट के नुकसान पर आदिल लेफ्टी कुल मिलाकर तीसरा ओवर फेंकते हुए अपने कोटे का, और पारी का ये 5वां ओवर। हालांकि आने वाले पावर प्ले इस समय प्रगति पर है, और अभी तक शानदार प्रयोग किया है इस पावर प्ले का, इस्तेमाल बेहतरीन किया है। ये बात अलग है कि एक विकेट जरूर खोया है वहां पर हाजी 11 की टीम ने। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए केजीआई के विरुद्ध आजाद स्टेडियम ख्रू से सीधा प्रसारण जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से आप तक पहुंचता हुआ। ख्रू प्रीमियर लीग के अंतर्गत ये बेहतरीन सफल प्रतियोगिता, और आज के दिन का पहला मुकाबला इस समय बीच मैदान में। 53 रन 5वें ओवर में एक विकेट के नुकसान पर गेंदबाजी के मोर्चे पे आदिल लेफ्टी, और उनके सामने है बल्लेबाज, और किस प्रकार से मुबशर और उनके साथी बल्लेबाज यहां से क्या रणनीति रहेगी। एक साझेदारी की आवश्यकता है। हालांकि शुरुआती ओवर में एक विकेट जरूर खोए हैं, लेकिन बेहतरीन लाजवाब और विश्वसनीय आधारशिला अब तक दे बैठे हैं दोनों बल्लेबाज हाजी 11 को। 53 रन एक विकेट के नुकसान पर आदिल लेफ्टी इस छोर से, यानी कि कमेंटेटर मंच से दौड़ना शुरू किया। लेफ्ट आर्म उनकी ये गेंद, और इस बार लेग स्टंप पर हालांकि खेलना चाहते थे विकेट कीपर भी वहां पर, चूंकि 1 रन पूरा कर रहे हैं। सटीक थ्रो स्टंप्स पे लगता खतरे में पड़ सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने, वाइड का इशारा और खाते में जोड़ते हुए कुल योग 55 हो गया है 5वें ओवर में। एक विकेट के नुकसान पर तेज तरार शुरुआत आज देखने को मिली प्रारंभिक जोड़ी द्वारा। अगर बात करें आसिफ और मुबशर की, लेकिन आसिफ अपना विकेट गंवाने के बाद पवेलियन लौट चुके हैं, और ऐसे में बीच मैदान में ये 2 मान्यता प्राप्त बल्लेबाज काफी कुछ निर्भर करेगा इस जोड़ी पे। यहां से एक आकर्षक मुकाबले की आवश्यकता। क्रिकेट के समर्थकों दीवाने इसी मुद्रा में इस मुकाबले का आनंद लेते हुए, हालांकि धीरे धीरे से समर्थक इस मैदान की ओर बढ़ते हुए, क्योंकि जानते हैं मुकाबला शुरुआती क्षणों में है, और आने वाले समय में एक रोमांचक स्थिति, कांटे की टक्कर का मुकाबला होने की आशंका है। इस समय 55 रन कुल योग हो चुका है। सामना करने के लिए दाएं हाथ के बल्लेबाज, और गेंदबाजी का मोर्चा आदिल लेफ्टी के पास। बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में अगली बार उनकी ये गेंद, और इस बार खेला जरूर, लेकिन उस ओर खिलाड़ी है तैनात। उन्होंने गेंद को फील्ड किया, फील्ड करके दूसरे खिलाड़ी के जरिए जब तक वापस गेंद लौटी तब तक रन बनने की किसी भी संभावना को समाप्त किया। स्कोर अभी भी टिका हुआ 55 रन 5वें ओवर में। एक विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले बल्लेबाज मात्र आसिफ, जो कि आसिफ लेफ्टी आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं, और बीच मैदान में इस समय 2 मान्यता प्राप्त बल्लेबाज हालांकि प्रयास कर रहे हैं। साझेदारी की आवश्यकता है दूसरे विकेट के लिए, और उसी मुद्रा में दोनों बल्लेबाज बीच मैदान में टिके हुए। आदिल लेफ्टी इस ओवर में अगली बार 55 रन एक विकेट के नुकसान पर हाजी 11 टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए केजीआई के विरुद्ध। अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकलती हुई एक कोण बनाती हुई सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में, और शेष कार्य पूरा किया विकेट कीपर ने। रनों की गति में कोई वृद्धि नहीं। स्कोर अभी भी टिका हुआ 55 5वें ओवर में। एक विकेट के नुकसान पर, और इस समय लगातार प्रयास हो रहा है दोनों छोर से गेंदबाजी हो रही है। आकर्षक वातावरण, क्रिकेट के अनुकूल और अच्छी खासी संख्या इस मुकाबले का आनंद लेती हुई जेके स्पोर्ट्स टाइम के सभी व्यूअर्स का स्वागत अभिवादन करना चाहेंगे अपना प्यार और विचार देने के लिए। आदिल लेफ्टी इस ओवर में अगली बार 55 रन एक विकेट के नुकसान पर बल्लेबाज के लिए उनकी ये गेंद, इस बार अच्छी गेंद आवश्यकता के गलियारे में फेंकी। अंतिम समय बैट और पैड मिलाकर सम्मानजनक रूप से खेला बगैर किसी रन के। स्कोर अभी भी टिका हुआ 55
एक विकेट के नुकसान पर लगातार प्रयास हो रहे हैं दोनों छोर से, लेकिन अभी तक सक्षम नहीं हो पाए हैं। 55 एक विकेट के नुकसान पर रनों की गति में इस ओवर में थोड़ा सा अंकुश लगा हुआ है और ऐसे में दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज, हालांकि आसिफ आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं और ये बल्लेबाज बीच मैदान में संघर्षपूर्ण मुकाबला, और आदिल लेफ्टी इस समय एक बेहतरीन और लाजवाब गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हैं। लगातार आक्रमण ऑफ स्टंप और ऑफ स्टंप के आसपास, जिसके चलते इस ओवर में अभी तक हालांकि 1-2 रन अभी तक आए हैं, तो कहीं ना कहीं कहना चाहिए अच्छा ओवर कहा जा सकता है केजीआई के दृष्टिकोण से। आदिल लेफ्टी इस ओवर में अगली बार राइट आर्म ओवर द विकेट, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, अच्छी गेंद, हालांकि खेला जरूर लेकिन गेंद निचले सिरे पे लगने के बाद वही पास में लुढ़की बगैर किसी रन के। स्कोर अभी भी 55 रन और पिछली कुछ गेंदों से लगातार रनों की गति में जो अंकुश लगा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि और कहना चाहिए कि अच्छा कहा जा सकता है केजीआई के दृष्टिकोण से। Absolutely right. They need that. They need to bounce back at this crucial juncture of the game, and they need to work on the basics once again. It's a high time for the bowlers to bring things back on track. Otherwise, it will be too late, and it won't be easy to bounce back with the passage of time. And it's the high time for Adil Lapti and his colleagues. They need to bowl in that corridor of uncertainty and keep the batsmen guessing, and don't provide them any sort of width on off. Next ball coming up. Here goes Adil Apti and those are outside the off stump and further turning outwards, and umpire signal that's a wide. So there is one more run added to the tally. But Nazir, we were talking about that. They need to bowl in the right areas. They need to tighten the nose of the two batters. Don't offer any kind of width, because the way we saw from over number 2 till this video, we are seeing that batters are trying to go hammer and tonk, and they are really taking them on. It is better to bowl in that corridor of uncertainty and keep the batsmen guessing and try to bring the ball back in, and that's what we call that the ball, that one nips back in, and that they have to do badly at this crucial juncture. And Adil can really bring the ball back into the batsman, and he can move the ball away from the batsman. He can do both things. In the meantime, goes and goes. Oh, that's gone over backwards. Correct. That's gone all the way for 6. Flicked away. Nazir, look at that one. That's gone over backwards. Correct. But that was a prolific show. That was a beauty. That was adorable hit all the way down to the boundary. जी बिल्कुल, जैसे ही उनके रडार में गेंद मिली और अपने आप को संतुलित करते हुए गेंद को निकाल दिया बैकवर्ड स्क्वायर लेग से बाहर 6 रनों के लिए, और छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 61 रन। छठे ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले मात्र बल्लेबाज आसिफ, जो कि बाएं हाथ के बल्लेबाज थे, कुछ तेज तरार शुरुआत जरूर की थी लेकिन एक बड़ी पारी में उस अपनी पारी को परिवर्तन नहीं कर पाए, जिसके चलते इस समय मात्र एक सफलता हाथ लगी है केजीआई के, और कुल योग 63 रन। लगातार प्रहार हो रहे हैं दोनों छोर से, और एक दबाव की स्थिति जो बनी थी उससे लगातार निकलने की कोशिश अभी तक का सक्षम हुए हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर मनोबल देखने को मिली कि जिस प्रकार से विकेट जरूर खोया है, लेकिन जिस तरीके से स्कोरबोर्ड को गतिशील रखा है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। Absolutely right, and the way they are ticking the scoreboard and they're keeping the ball, they are trying to make an impact here, and they're trying to knock the ball in the gaps, and mostly we haven't seen those knocking into the gaps, but we have seen the ball going out of the park in a distant kind of manner. But at the moment they're really here reaping the harvest, and they have to make sure that with the passage of time they knock the ball in the gaps, and they play the ball in those pockets on either side of the track by escaping for those quick singles and converting those singles into doubles will definitely set the tone for the good score. 63 रन 6 ओवर पूरे हो चुके हैं, और एक और परिवर्तन देखने को मिल रहा है। संभवतः आदिल परिवर्तन के तौर पर लगाए गए हैं, तो देखना है किस प्रकार से वे गेंदबाजी करेंगे। 63 रन 1 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर समाप्त हो चुके हैं। छठा ओवर लेकर के तैयार हैं वहां पर एक और परिवर्तन, और दोहरे परिवर्तन के साथ आदिल, जो कि अपने कोटे का पहला और कुल मिलाकर छठा ओवर लेकर के तैयार हैं केजीआई की ओर से। 63 रन 1 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर की समाप्ति के बाद हाजी 11 टॉस जीतने के बाद इस निर्णायक मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करता हुआ केजीआई के विरुद्ध आजाद स्टेडियम क्रू से सीधा प्रसारण जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से आप सभी व्यूअर्स तक पहुंचता हुआ। नए ओवर की शुरुआत और गेंदबाजी का मोर्चा आदिल के पास, और देखना होगा कि किस प्रकार से वो यहां से गेंदबाजी करेंगे, क्योंकि स्कोर बोर्ड पे काफी रन लग चुके हैं। मात्र 5 ओवर में 63 रन बन चुके हैं और एक ही विकेट अभी तक गंवाया है हाजी 11 की टीम ने। तो एक आत्मविश्वास भरी गेंदबाजी कर रही होगी, फील्ड अनुशासित गेंदबाजी कर रही होगी यहां से आदिल को। चलिए पहली गेंद लेकर के बाएं हाथ के बल्लेबाज को ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद को खेला जगह बनाते हुए, लेकिन सीधे खिलाड़ी के पास रनों की गति में कोई वृद्धि नहीं। 5.1 63 रन 1 विकेट के नुकसान पर यह पारी का छठा ओवर प्रगति पर। We are in over number 6 and it's 63 for the loss of 1, and that's a good ball. Loud better line on the occasion, keeps that one out to the Sulia cover for no run. It is in cover.
Is he a left-hander out in the middle? Yeah, it is Syria mid-wicket to be precise on that occasion. Worked away onto the onside for no run. 63 for the loss of one. Next ball from Adil. Goes and bows. And that's in the air. Chance for the field. Wicketkeeper gets underneath that one. Holding on to the ball. Second blood is drawn at the score of 63, Nazir. This is a big breakthrough, and that needed by KGI badly, and they got that on that occasion. Wicketkeeper settling underneath. Getting underneath that one, holding on to the ball. There goes wicket number 2. Second blood is drawn, and Haji 11 lost their second batter. The batsman at number 3 is walking back to the pavilion slowly and steadily. अजी बिल्कुल यहाँ पर जिस प्रकार की आवश्यकता थी, एक साझेदारी जो धीरे धीरे से पनप रही थी, उसको तोड़ने की आवश्यकता थी, वे कर दिखाया आज आदिल ने, और उनको मिलती हुई ये सफलता। कुल मिलाकर दूसरे विकेट का पतन होता हुआ हाजी 11 के लिए 63 रन पे दूसरा विकेट 6 ओवर में, और आदिल को मिलने वाली ये पहली सफलता, और कहीं ना कहीं आत्मविश्वास लौटा होगा आदिल का, जिस प्रकार से उन्होंने इस विकेट को अपने खाते में जोड़ा है। थैंक यू शाहिदुल इस्लाम, बट उमर, शाहिदुल इस्लाम, पॉल बशीर, गुलाम हसन, Muzammil Khalik and Arif Ganai, Dar Aryan, Arif Rathar and Arif Indrabi Athar and Parvez. Arif Indrabi Athar, Parvez, Mir Mukhtar and Said Zubair Gilani. Thank you all the beloved viewers of JK Sports Time for tuning in to the live broadcast. Arshad Magre and others, I'm really thankful to you. Thank you Arshad Magre for your love and sport. We need your sport time and again. We need your love time and again. It's your love and sport which is making dream work for all of us here in the Combox. Thank you Said Zubair Gilani and Srinagar Advertising Agency. All the beloved viewers, thank you once again. It's 63 for the loss of 2. We are into the 6th over. Next ball from Adil. अगली गेंद बेहतरीन गेंद सीधे बल्ले से खेला, हालांकि बॉलर के जिसे बॉलर्स बैक ड्राइव कहा जाता है, हालांकि प्रयास जरूर किया था वहां पर खुद अपने फॉलो थ्रू में फील्ड करने का, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब तक उसको फील्ड किया जाता लगभग सीमा रेखा की छेद से, तब तक पर्याप्त समय था 1 रन और खाते में जोड़ने का। 64 6 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर, और इस समय बीच मैदान में लगातार हमारे व्यूवर्स भी हमारे साथ बने हुए, खान फयाज, बट उमर, बट सज्जाद, लोन जावेद, वानी, अरहान और मलिक रफीक भी इस मुकाबले का आनंद लेते हैं। राकेश शर्मा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अब्दुल कयूम भी हमारे साथ बने हुए, सभी व्यूवर्स का स्वागत, हार्दिक अभिवादन करना चाहेंगे जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से अपना प्यार और विचार देने के लिए। यदि आप चाहें तो आप डिजिटल स्टार के जरिए भी हमें सम्मानित कर सकते हैं, हमें आपके सम्मान की प्रतीक्षा रहेगी। फिलहाल स्थिति अगर इस मुकाबले की बात करें तो मात्र 6 ओवर प्रगति पर और 64 रन कुल योग 2 विकेट के नुकसान पर आदिल, उनकी ये गेंद अच्छी गेंदोपेक्षा से उछलती हुई, हालांकि समझ नहीं पाए वहां पर बल्लेबाज, और छकाती हुई सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में। रनों की गति में कोई वृद्धि नहीं, स्कोर अभी भी 64 6 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर। हाजी 11 टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए इस निर्णायक और संघर्षपूर्ण मुकाबले में केजीआई के विरुद्ध आजाद स्टेडियम क्रू से सीधा प्रसारण आप तक जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से पहुंचता हुआ, और क्रू प्रीमियर लीग के अंतर्गत ये निर्णायक विश्वसनीय मुकाबला इस समय बीच मैदान में। इस ओवर में अगली बार ये गेंद और बाहर ले गए पर जोरदार अपील, हालांकि उत्साह में ज्यादा विश्वास में कम, नकारा वहां पर अंपायर ने। रनों की गति में कोई वृद्धि नहीं, 64 रन 2 विकेट के नुकसान पर हाजी 11। इस समय हमारे साथ साहिल मागरे, शाहिदुल इस्लाम, जुनैद और मोहम्मद सफियान भी हमारे साथ, निसार अहमद के साथ एजाज वानी, मुजम्मिल खालिक और बट उमर भी इस मुकाबले का आनंद लेते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। सईद जुबैर भी हमारे साथ बने हुए हैं। सभी व्यूअर्स का हार्दिक अभिवादन, स्वागत करना चाहेंगे जिस प्रकार से अपना प्यार, विचार और हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार और विचार देते रहिए। 64 रन 6 ओवर में और 2 विकेट के नुकसान पर कहीं ना कहीं अब रनों की गति पे अंकुश लगता हुआ मनोहर भाई। Well, absolutely, fall of wicket can do dream work for you. That's what is happening here at the Sunday. What is unfolding in front of in front of our eyes and in front of the beautiful viewers on JK Sports Time. Hamid Kashmiri, thank you for your love and sport. Followed by Dar Fayaz, Mushtaq Dar, Wani Arhan, and Mehran Meru, Junaid Ashraf, Mansoor Ahmad, Official Kamo, and Rais Bashir, Bilal Ahmad, But Umar, and Ahmad and others. Thank you for your love and support. Join us in numbers. Catch us live. We are live from Khrew Premier League. And this is Azad Sports Stadium hosting this all-important cricket tournament. Nazir, we're talking about that fall of wickets can do a dream work for your side, and that's what we're witnessing here at the centre. They were 53 at one stage after the completion of 4.3 balls, and now they are 64 after 6 overs. This is what can happen on a given day. So that's why
The game of glorious uncertainties can change its colors from bad to worse, from worse to worsening, and from good to better, from better to best. Isn't that? And at the moment it's 64 for the loss of 2. We are in over number 7. Riaz is in. There's one more change in the bowling. We'll have to wait and watch who's been brought into the attack. Very ball one. Goes and bows. That's a beauty. And Asal Khan can't do very much. That's a dot ball. Score man 64 for the loss of 2. Wicketkeeper couldn't stop that one cleanly. And he's in a deep pan there. But we'll have to wait and watch. Is he okay? He seems to be okay. But he isn't happy with bowler there. And the bowler is exercising his lips. And he isn't happy with the field there by the wicketkeeper. He allowed the ball to go past down to the Scalag area, but in the end no harm done. Score man 64 for the loss of 2 wickets. Over number 7, ball number 2 coming up. Let me take you through the field. On offside there is a third man backward, a point, cover point, extra cover on the boundary, short extra cover mid off in place. On the onside there is mid wicket on the boundary and long on the fence. There is Adil lefty fielding. And with this field, second ball coming up, and Sahil Khan gets ready to face the next one. It's bright sunshine out here at the centre. We're in the lap of the sky-touching peaks, and this is a beautiful sports centre available for cricketing here at Khrew, and I should say we're in the lap of heaven at the moment. And this is the big match of the summer underway. KGI is taking on and locking horns with Haji 11. First match of the day. We'll have to wait and watch. And Haji 11 is joined by John Sab, one of the entertainers of the valley. He's a wonderful person behind Riaz Kacha and his camp. He has really been phenomenal so far. And next ball, that's a dot ball. That's a low. Oh no, it isn't a dot ball. It's a wide to be precise. And there is addition to the tally. Score moves to 65 for the loss of 2. I was early into that one. And I threw it out earlier on, but it's 65 for the loss of 2. Over number 7 in progress. Next ball coming up. Bowler goes and bows, and that one once again drifts down the leg side. Is this going to run down to the boundary? We'll have to wait and watch. Will it be a chase for the field? It does. He gets around, does the mop up in style, but the two batters are coming back for the second run in the form of byes. And umpire signal, it's a wide. 3 extras added to the tally, and as his score moves to 68 for the loss of 2. We are in over number 7 of the match, way down the leg side, and he needs to be disciplined and out there with the ball. He has to show a lot of maturity and the discipline at the moment, because they can't afford too many freebies. Next ball goes and bows and clipped away, and Sahil Khan decided to scamper through for a quick single. Score moves to 69 for the loss of 2 wickets. We are in over number 7 of the match. A right arm spinner is bowling to. He was bowling to left-hander. Now he will be bowling to right-hander. But we have seen 3 of the lefties coming out to bat for Haji 11. They got a bunch of left-handers in their lineup, and the left-handers are known for their big hitting. And we have seen some terrific batters at the international arena. They really made their name and fame at that podium and platform. In the meantime, we'll have to wait and watch. It will be right-hander bowler to right-hander batsman out in the middle. This is Khrew Premier League, coming to you live and exclusively from Azad Stadium, Khrew. Next ball to right-hander, 69 for the loss of 2. Next ball goes and bows, and that one outside the off stump. He wanted to drive that one and unable to make any sort of contact. It's a dot ball, and every dot ball is worth and weight in a gold here, Nazir. You have to make sure that you chipped in with dots and let the batters chew too many balls, and that can really put your side in ascendancy. Short one way outside the off stump, cuts that one, but straight a sweeper cover, just a single. Score moves to 70 for the loss of 2. We are in over number 7 of the match. 70 रन 2 विकेट के नुकसान पर ये 7वां ओवर पारी का चलता हुआ, और अभी तक का कहना चाहिए कि एक अंकुश लगा हुआ है रन गति पे, जिस प्रकार से 2 विकेट गंवाने के बाद हाजी 11 की टीम
एक आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करते हैं, क्योंकि जानते हैं यहां से विकेट नहीं खोएंगे तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक अच्छे स्कोर तक पहुंच सकते हैं ये गेंद। और इस बार ऑफ स्टंप से काफी बाहर, विकेट कीपर ने प्रयास जरूर किया, हालांकि रन लेने की कोशिश, वाइड का इशारा अंपायर द्वारा। 1 रन और अतिरिक्त के रूप में 71 हो गया है 7वें ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर। लगातार प्रयास जरूर कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी दिशाहीन गेंदबाजी अभी तक देखने को मिली है इस ओवर में। लगातार कभी ऑफ स्टंप से बाहर अपनी दिशा भटकते हैं और कभी लेग स्टंप से बाहर। दिशा और लंबाई पे नियंत्रण करना होगा गेंदबाज को, एक प्रभावशाली गेंदबाजी करनी होगी। तिरछे बॉलिंग के साथ ये गेंद, अच्छी गेंद इस बार मिडल स्टंप पर खेला जरूर, लेकिन सीधे वहां क्षेत्र रक्षण के पास। रनों की गति में कोई वृद्धि नहीं, स्कोर अभी भी 71। 2 विकेट के नुकसान पर यह 7वां ओवर प्रगति पर है। हाजी 11 की टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते निर्णायक मुकाबले में केजीआई के विरुद्ध ख्रू प्रीमियर लीग के अंतर्गत यह प्रतियोगिता आजाद स्टेडियम ख्रू से सीधा प्रसार आप तक पहुंचता हुआ। अगली गेंद फिर ऑफ स्टंप पर, हालांकि कलाइयों के सारे बीचों बीच लिया उसको बल्ले के, और वहां पे फील्ड हुई बगैर किसी रन के। 71 रन अभी भी होगा, और यहां पे कहीं ना कहीं रनों की गति पे अंकुश लगा है पिछले 2-3 ओवर से। अगर बात करें 53 रन पे पहला विकेट गिरा था और उसके बाद 64 पे दूसरा विकेट, और अब अगर बात करें तो कुल मिलाकर 16 रन बने हैं बाकी 3 ओवर से। तो कहीं ना कहीं एक शानदार वापसी अब तक का देखने को मिली है गेंदबाजी द्वारा। I totally agree with your statement, and they've really been phenomenal with the ball after that absolute carnage in the first part of the innings. Now in the next 3 overs they have really been able to tighten the nose, and they're bowling in the right areas, but this spinner really allowed the other side to seize the initiative quite a bit. He bowled those Weber deliveries, wide deliveries, and casting his side few buys, and totally we can say that this was a great bowling from this man who bowled with the right arm orthodox, and he was really off colour today. Bowled too many wide deliveries, and along the other side to seize the initiative quite a bit, and they're now 71 for 2 after the completion of 7 overs. Well, they're scoring just shade of a 10 at the moment, and if they manage to carry on with the same pace, 200 is still gettable, and they can manage to get there in style. And that one driven but straight to long off, and both the batters will scamper through for a single, and that's all. They will get 72 for the loss of 2. Over number 8, ball number 2 coming up, and as we watch it at the moment, 2 down, 8 wickets in hand. We're just in over number 8, there's 72. 72 पे 8, और यहां से जिस प्रकार से दोनों बल्लेबाज आत्मविश्वास संयम के साथ स्कोरबोर्ड को गतिशील रखते हुए, और यदि इसी प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं तो जैसा कि आपने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि 200 का लक्ष्य जरूर छुएंगे, लेकिन ऐसे में क्रिकेट महान अनुसंधानों का खेल है। लेग स्टंप पर आती हुई गेंद को मोड़ा जरूर हल्के हाथों के साथ जब तक उसको फील्ड किया जाता। पर्याप्त समय था दोनों बल्लेबाजों के पास 1 रन लेने का, 1 रन के साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ 73 हाजी 11 का। 2 विकेट के नुकसान पर 8वां ओवर प्रगति पर, और गेंदबाजी का दायित्व आदिल के पास, जो कि अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर के एक विकेट जरूर उनके हाथ लगी है, और कुल मिलाकर 2 सफलताएं अब तक केजीआई के खाते में गई हैं। 73 2 विकेट के नुकसान पर इस समय शांत धीमा क्रिकेट, लेकिन एक अच्छी सूझबूझ और तालमेल का परिचय देते हुए दोनों बल्लेबाज, क्योंकि जानते हैं उनका विकेट पे बने रहना कितना महत्वपूर्ण है, और ऐसे में आवश्यकता है एक साझेदारी की, और बिल्कुल उसी मुद्रा में सही और आत्मविश्वास बीच मैदान में बना हुआ दोनों बल्लेबाजों द्वारा। इस बार अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर, हालांकि उतना ही स्ट्रोक बेहतरीन, लेकिन सीधे फील्डर के हाथ में रन कोई बनेगा नहीं, और स्कोर अभी भी टिका हुआ 73 रन 8वें ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर। एक अच्छी शुरुआत देने के बाद, हालांकि 2 विकेट गिरने के बाद एक आकृता भंग हुई है बल्लेबाजों की। हालांकि प्रयास जरूर कर रहे हैं बड़े स्ट्रोक की, लेकिन सफलता नहीं मिली। इस ओवर खेला बेहतरीन, शानदार और विश्वसनीय क्षेत्र रक्षण, निश्चित तौर पर कुछ रन बचाए अपने लिए और अपनी टीम के लिए। 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ 74 8वें ओवर में, हालांकि अभी भी 12 ओवर का आना बाकी है। तो ऐसे में एक साझेदारी की आवश्यकता, जिसकी कि हम बार बार बात कर रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बात करें, यहाँ इस मुकाबले की बात करें, छोटी छोटी तिगड़ियां जो है एक सम्मानजनक, एक विशाल लक्ष्य तक पहुंचा सकती है टीम और बल्लेबाज को। Over number 8 in progress. Adil is bowling to left-hander Sohail Khan, and wrapped him on the pad. Shot for LBW, but umpire says it's clearly going down the leg side. Are they going to come back for the second? And yeah, of course, they're back for the second in time. Leg by signaled, but that was clearly going down the leg side, and that's the only thing, that's the only reason which saved the batsman on that occasion. Adil will be bowling to Sohail Khan. Sohail is the left-hander out in the middle. Is the opener batter of Haji 11, and he need to gear up a bit, and he need to cheer up a bit, and he has to accelerate. Oh, that's a good shot, upish, and down towards the wideish mid-off area. The fielder in pursuit of the ball gets to it, and he does the mop up, and sending the ball back to the bowler. In the meantime, both the batters had time in the ball
to scamper through for a single, and that's all they will get. And with that single, score, prosper and propel to next level for the loss of 2 after the completion of 8 overs. Haji 11 after batting first. Let me take you through what is the actual score at the moment. To be precise and accurate, it is 77 for the loss of 2 after the completion of 8 overs. 8 done, 77 for the loss of 2. And it's going to be Riaz Peer will be bowling in over number 9, and on strike will be Sam left-hander, who's been batting since ball 1 and is trying to take his side to some sort of respectability. As of now, they're really in a good position, and that's lifted up. And will this be caught? No, it doesn't. And it might be caught in the crowd. That's gone all the way onto the roadside for 6. That's a huge hit, humongous blow, and monster swan. It's a monster out of the park, Nazir, and that 6 takes the score to 83 for the loss of 2 wickets over number 9 in progress. 83 2 विकेट के नुकसान पर 9वां ओवर प्रगति पर स्वागत किया वहां पर संभवतः रियाज पीर है गेंदबाज, और एक बार फिर बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए उनकी ये गेंद फिर ऑफ स्टंप पर जगह मिली, स्ट्रोक खेला और गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई। एक और चौका। लगातार प्रयास हो रहे हैं दोनों छोर से, विस्फोटक बल्लेबाजी बाएं हाथ के बल्लेबाज द्वारा, और 2 गेंदों से 10 रन अभी तक खर्च चुके हैं रियाज पीर, जिसके चलते इस समय 87 स्कोरबोर्ड जा लगा है 2 विकेट के नुकसान पर, और पारी का मात्र 9वां ओवर प्रगति पर। इसके तुरंत बाद 11 ओवर का खेल अभी बाकी है, तो ऐसे में एक बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर टीम हाजी 11 की। क्रू प्रीमियर लीग 17-3 वर्ष 2022 के अंतर्गत आजाद स्टेडियम क्रू से सीधा प्रसारण जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से आप तक पहुंचता हुआ। रियाज पीर इस ओवर में अगली बार बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद, और इस बार फिर ऑफ स्टंप पर, हालांकि गेंद का पीछा किया, निकाला उसको उस ओर खिलाड़ी, जब तक फील्ड किया जाता संभवतः वहां पर 1 रन और खाते में जोड़ता हुआ और स्कोर बढ़ता हुआ 88 2 विकेट के नुकसान पर मात्र 9वें ओवर में, और कुल मिलाकर 11 रन अभी तक खर्च चुके हैं रियाज पीर इस ओवर में। Riaz Peer is on the receiving end at the moment. He has to bowl in the right areas. He has to keep things tight at the moment. It's 88 for the loss of 2. We are in over number 9. Next ball coming up. And on strike will be right-hander with wide slip in place. Oh, look at that one. That's gone flat batted, but straight to the throat of fielder. Can you believe? Summer does the rest in style, and there goes wicket number 3. Flat batted straight down to the throat of the fielder, and Summer does well. For a while I thought that's going to be a flat batted 6, but in the end it wasn't so. Bowler getting the last laugh. 3 down at the score of 88. We are in over number 9 up the match. जैसे ही बारी आगे बढ़ रही थी, हालांकि बेहतरीन बल्लेबाजी दोनों छोर से देखने को मिल रही थी, एकदम एकाग्रता भंग हुए, स्ट्रोक खेला लेकिन सीधे वहां पर खिलाड़ी को भेद नहीं पाए, तीसरे विकेट को किया चलता, और केजीआई को मिलने वाली ये तीसरी सफलता 88 पे 3 9वें ओवर में, और रियाज पीर को मिलने वाली ये दूसरी सफलता संभवतः। बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन उन्होंने किया है आज। हालांकि ये अलग बात है कि खर्चीले साबित हुए हैं, लेकिन ललचाया वहां पर बल्लेबाज को, मजबूर किया स्ट्रोक लेने का, और जिसके चलते रनों की धीमी गति से तंग आकर इस बार स्ट्रोक खेल बैठे और सीधे खिलाड़ी समर के हाथ में। तो 3 विकेट 88 पे गिर चुके हैं और यहां से पकड़ बनानी होगी। यदि एक और विकेट यहां से चटका लेते हैं तो कहीं ना कहीं इस मुकाबले में और ज्यादा मनोवैज्ञानिक दबाव की स्थिति बल्लेबाजों पर जमा सकते हैं। Well, absolutely, pressure building and mounting at the moment, and that was a needless one. Knowing the fact 88 on the board, still going for that expensive pull, that isn't good batsmanship out in the middle. You have to make sure that you knock the ball in the gaps. You can play the ball into the pockets on either side of the track, but this is not the way. You had 88 runs on the board, still needless hit of the blade that flat batted straight to Summer, and it does well on that occasion, but it's better to stay calm out in the middle. Let's be patient. And having patience and being patient out in the middle will take a lot of caliber and class. That's why it's a gutsy approach for a batter, and if he manages to do so, we can use that. He's a bravado personality out in the middle, and he got those skills how to soak the pressure. But at the moment there was no pressure at all. They had 88 on the board, and still going for that expensive that pull shot that wasn't available at that time, that was in need of an hour, but he's still going for that expensive pull and ended up straight down to the throat of Summer. Summer does well. We're in the back of third one at the score of
88. We are in over number 9 of the match. इस प्रकार के स्ट्रोक खेलने की आवश्यकता नहीं थी, हालांकि स्कोरबोर्ड पे काफी रन लग चुके हैं, 88 रन 3 विकेट के नुकसान पर, लेकिन ऐसा कर बैठे और जिसका खमियाजा भुगतना पड़ा। मात्र 9वें ओवर में 88 रन 3 विकेट के नुकसान पर हाजी 11, और इस समय बीच मैदान में नए बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके हैं और देखना है किस प्रकार से वो यहां से बल्लेबाजी करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। रियाज पीर इस ओवर में अगली बार अपना ओवर पूरा करते हुए 88 3 विकेट के नुकसान पर। यह है अब तक का लेखा जोखा इस मुकाबले का, पहली पारी चलती हुई और 9वां ओवर इसमें गेंदबाजी के मोर्चे पे रियाज पीर एक विकेट लेने के बाद नई ऊर्जा और उत्साह के साथ गेंदबाजी करते हुए, और आने वाले बल्लेबाज के लिए यह काफी निर्भर करेगा किस प्रकार से यहां से वो सहजता और संयम के साथ बल्लेबाजी करें। रियाज की गेंद अच्छी गेंद में स्टंप पे आती हुई, खेला जरूर लेकिन सीधे वहां पर खिलाड़ी के पास, रनों की गति में कोई वृद्धि नहीं, स्कोर अभी भी टिका हुआ 88 3 विकेट के नुकसान पर। शांत दिमाग क्रिकेट, लेकिन एक विकेट लेने के बाद एक नई ऊर्जा और उत्साह के साथ गेंदबाजी करते हैं रियाज पीर। Riaz with the next ball. Swept away, but there is a protection. Will he be able to cut it off? Does. But both the batters managed to escape for a quick single. 89 for the loss of 3 after 9 overs. That wicket coming handy for KGI. KGI need to put things back on track. They need to bowl in the right areas. Bowl in that corridor of uncertainty. Don't give an inch away to the batting team. And if they manage to provide them freebies, and believe me, Kachra-led side can really take them on, and they can really set the tone for the good score. And at the moment, it seems to be they are still in for a good score. And I believe that still 180, 190 isn't far behind imagination. It is still within the radar. अजी बिल्कुल 180 190 का लक्ष्य जरूर उनके दिमाग में होगा। यदि इसी प्रकार से जिस रन गति से अभी तक रन बने हैं तो 180 190 रन का लक्ष्य जरूर वो छूना चाहेंगे और विपक्षी टीम को एक दबाव की स्थिति में लाना चाहेंगे। क्या इसमें सफल हो पाएंगे अथवा नहीं, ये देखने वाली बात होगी। नए ओवर की शुरुआत पहली गेंद दे करके, ये गेंद इस बार अच्छी गेंद सीधे बल्ले से उसको सम्मानजनक रूप से खेला और वहां पे फील्ड हुई रियाज पीर द्वारा बगैर किसी रन के। इस बार यूनिस, रफीक बिलाल और बिलाल अहमद शेख भी हमारे साथ बने हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस ओवर में अगली बार सामने वाले छोर से, हालांकि वहां पर गेंद को निकाल दिया सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए, तो एक और चौका उनके खाते में जुड़ता हुआ। लगातार 93 रन हो चुका है 10वें ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर। और इधर जेके स्पोर्ट्स टाइम के सभी व्यूअर्स का हार्दिक अभिवादन, स्वागत करना चाहेंगे जिस प्रकार से लगातार अपना समर्थन और सहयोग देते हुए। RJ, thank you. That's a good shot inside out. Will this be caught up? No, it doesn't. That's a boundary. That was a beautiful shot. And it deserved a boundary. It got that in style. That was a beautiful shot. Inside out goes batsman, and Adil need to bowl in the right areas. But that was a brilliant shot, to be precise. There was nothing wrong with the ball. That was a good ball. But that was the execution to perfection from that man. Right hand out in the middle. Young fella has hit the young fella to the boundary on that occasion. Next ball from Adil. Goes and bows. That's a good ball. That is a beauty. Nearly ripping him through, but luckily he's still unbeaten and is still breathing alive at the crease. It's 93 for the loss of 3. We are in over number 10 of the match. KGI bowling first against Riaz Kachra-led side, Haji 11. Next ball from Adil. Adil goes. Flighted. That one takes him on the full and fielded as well. Look at Sama. He's a great athlete. He's always agile as cat out in the field, and safest pair on the park today. Samad as well, picking that one up and hurling that one with tremendous sense of urgency. एक रन वहां पर जरूर मिलता हुआ और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 94। 3 विकेट के नुकसान पर यह पारी का 10वां ओवर प्रगति पर है और लगातार प्रयास हो रहे हैं वहां पर। हालांकि क्षेत्ररक्षण ने बहुत ही शानदार क्षेत्ररक्षण करके थ्रो जरूर किया था, लेकिन स्टिक स्टंप्स पे पड़ता तो खतरे में पड़ सकते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस ओवर में अगली बार 94 3 विकेट के नुकसान पर बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। छोटा बॉलिंग रनअप, तिरछे बॉलिंग रनअप के साथ क्रीज के कोने से, और देखना है इस गेंद पर किस प्रकार से बल्लेबाजी होती है। ये गेंद इस बार अच्छी गेंद, हालांकि बैकफुट पर जाकर के सीधे बल्ले से खेला जरूर, खुद अपने फॉलो थ्रू में फील्ड किया वहां पर संभवतः आदिल ने। रनों की गति में कोई इजाफा नहीं, स्कोर अभी भी टिका हुआ 94। 10 ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेट के नुकसान पर हाजी 11 KGI के विरुद्ध इस क्रू प्रीमियर लीग 17 वर्ष 2022 के अंतर्गत आजाद स्टेडियम क्रू से सीधा प्रसारण जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से आप सभी व्यूअर्स तक पहुंचता हुआ। Well, a 10 overs done and dusted. Halfway down, 94 for the loss of 3. It costed them 3 wickets, but they've been able to fetch 94 runs. Its correction comes in. It's 98 to be precise, and that isn't bad. Those are not the bad figures, Nazir, at the moment. 98 after 10 overs, after losing 3 wickets.
They have still 7 wickets in the kitty in the bank, and they can really go for the full Monty in the remaining 10 overs. And if they manage to bat out next 4 or 5 overs, then they can really give the license to their middle and down the order batters to go for hammer and tongue, and they can really take the bowlers on. But at the time, at this crucial juncture, we'll have to wait and watch. And you can see the dimensions of the sports field, the beautiful and the scenic view of Khrew's Azad Stadium. It's a beautiful sports center available for cricketing, and you can watch the dimensions, the beauty, the scenic view, the picturesque scene, and the crowd build up for this all important cricket match. You can see they are joined and they are thronged into the center in numbers. And you can see Haji 11 is in their dugout, and John Saab, one of the entertainers, is there. And there you can see John Saab on your screens at the moment. He is famously known as entertainer in this part of the world, and he loves to cover every match in the southern part of country. But at the moment it's 98 for the loss of 3 after the completion of 10 overs. But from here on we'll have to wait and watch what kind of approach they will be using for next 10 overs. In first 10 overs, in first passage of play, they were really going off to the bowlers. Can they continue with the same pace? And it will be interesting to see what kind of approach they will be using for next 10 overs. But I believe that they will definitely love to go and to score that 200, and that can really put them in ascendance. And that's in the air. Fielder is there, but it will definitely evade him all the way down to the boundary of mid-wicket. 6 more, and the next passage begins with a huge 6, slogged away for 6, and Nazir, there it is, 104, 100 comes up for Haji 11 in over number 11. Ball number 1 yielded a 6, and it is the clear indication that they are going to go off to the bowlers in next passage of 10 overs. जी बिल्कुल उनके पास अभी 7 विकेट हाथ में है, और ऐसे में इस प्रकार के बल्लेबाजी की आवश्यकता है, और बिल्कुल उसी मुद्रा में लगातार विस्फोटक बल्लेबाजी दोनों छोर से होती है। इस ओवर में अगली बार, इस बार फिर लेग स्टंप पर जबरदस्त प्रहार करने की कोशिश, पूरी तरह से छकाया, गेंद वही पास में लुढ़की बगैर किसी रन के। 104 रन तहरे अंकों में स्कोर पहुंचता हुआ 3 विकेट के नुकसान पर हाजी 11 केजीआई के विरुद्ध, और अभी भी 7 विकेट हाथ में है। तो ऐसे में एक जबरदस्त और विस्फोटक बल्लेबाजी देखने को मिलेगी। इस बार गेंद को खेला हवा में उस ओर खिलाड़ी, लेकिन गेंद जा रही है सीमा रेखा की ओर, और सीमा रेखा से बाहर निकलती हुई 4 रनों के लिए इस चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 108 रन, 3 विकेट के नुकसान पर 11वां ओवर इस समय प्रगति पर। हालांकि आकर्षक मुकाबला इस समय बीच मैदान में है। रईस कोहली जो कि इस समय गेंदबाजी के मोर्चे पे लगे हुए हैं, और देखना है किस प्रकार से वो अपने कप्तान के विश्वास पे खड़े उतरते हैं। ये देखना होगा, एक फील्ड अनुशासित गेंदबाजी करनी होगी, स्टंप्स टू स्टंप्स गेंदबाजी करनी होगी यदि कुछ प्रभावशाली गेंदबाजी करना है। इस बार अच्छी गेंद, हालांकि खेला जरूर, लेकिन वहां पर गेंद सीधे क्षेत्र रक्षण के हाथ में। रनों की गति में कोई वृद्धि नहीं, स्कोर अभी भी टिका हुआ 108 रन 11वें ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर। और क्या बेहतरीन, विश्वसनीय, मजबूत आधारशिला मिलने के बाद एक सम्मानजनक स्कोर की ओर अग्रसर होती हुई टीम हाजी 11 की। इस ओवर में अगली बार रईस की ये गेंद, इस बार इसको खेला जरूर, उस ओर खिलाड़ी हैं, जब तक फील्ड किया जाता तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास समय था, लेकिन गेंद उनके हाथ से छिटकी और निकल गई सीमा रेखा से बाहर। 4 रनों के लिए खराब क्षेत्र रक्षण का प्रदर्शन, जहां पे 1 ही रन होना चाहिए था, वहां पे चौका मिलता हुआ 112 हो गया कुल योग मात्र 11वें ओवर में। 11 ओवर समाप्त हो चुके हैं, क्षमा कीजिएगा, 11 ओवर समाप्त, 112, 3 विकेट के नुकसान पर हाजी 11 टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करता हुआ केजीआई के विरुद्ध। 112 for the loss of 3. We are in over number 11, and a sloppy field there by the fielder long on, where there was a single and he conceded 4 runs, and that is a blessing in disguise for the team batting first. Haji 11, they are 112 after the completion of 11 overs. 9 overs at their disposal. 54 legitimate balls are going to come. There are 7 wickets in their kitty. It's Adil to bowl over number 12. Ball 1 clipped away by Sohail Khan, and both the batters will fetch a single. 113 on the board for the loss of 3 wickets. And I would definitely love to thank our proud sponsors, Aqua Fenestration, Anthem Sports India, Fashion Feast, Real Estate Papur, Shining Star Papur, and MHM Multi-Fashion Branded Store, Agriclan, Magam. In the meantime, it's 113 for the loss of 3. Over number 12 in progress. Second ball, he wanted to lift that one up off the inner edge. Will this be cut off? It's a kind of a lemon cut, Nazir. But in the meantime, both the batters are coming back for the second. 115 for the loss of 3. Reyes Kohli is bowling, and John Saab, one of the beautiful entertainers of the valley,
is a sensational entertainer and is giving pep talk beyond the boundaries. He's conveying a loud and clear message how to operate from here on. 115 on the board for the loss of 3. And look at that one, that's in the air, but there's no need to run for those, 4 of those to be precise. That's a boundary. 119 on the board for the loss of 3 wickets. And Nazir, what I told you earlier on, they were definitely love to go distant, and they were definitely love to go hammer and tonk. That's in front of your eyes, unfolding right now. This time that's a beautiful shot, a straight to fill a race Kohli. Just a single. 120 on the board for the loss of 3. Ever number 12 in progress. 120 3 विकेट के नुकसान पर, हालांकि 7 विकेट हाथ में है, तो ऐसे में कोई दबाव की स्थिति नहीं है वहां पर बल्लेबाजों पे। और जिस प्रकार से दोनों बल्लेबाज, हालांकि एक बाएं हाथ का बल्लेबाज और एक दाएं हाथ का बल्लेबाज प्रहार कर रहे हैं हर एक गेंदबाज पे, और अभी तक उसमें सफल भी हो पाए। इस ओवर में अगली बार आदिल की गेंद बार ऑफ स्टंप पर, कलाइयों के सारे मोड़ा, हालांकि उस ओर खिलाड़ी है तैनात, और रन बनने की किसी भी संभावना को समाप्त किया। स्कोर अभी भी टिका हुआ 120 3 विकेट के नुकसान पर। यह पारी का संभवतः 13वां ओवर प्रगति पर है और 120 रन अभी तक का बना चुके हैं। 12वां ओवर क्षमा कीजिएगा। इस ओवर में अगली बार आदिल की गेंद, और बार फिर प्रहार किया, हालांकि उस ओर खिलाड़ी जा रहे हैं, लेकिन गेंद जा रही है सीमा रेखा की और पीछे खिलाड़ी, जब तक उसको फील्ड किया जाता। शानदार क्षेत्र रक्षण, निश्चित तौर पर जितनी भी प्रशंसा की जाए उतने कम, और कुछ रन बचाए अपने लिए और अपनी टीम के लिए। 1 रन और खाते में जोड़ता हुआ 121 रन 12 ओवर की समाप्ति के बाद। 3 विकेट के नुकसान पर 8 ओवर का खेल बचा है, तो ऐसे में तेज तरार विस्फोटक शुरुआत यहां से आगे इन बचे हुए ओवर में ज्यादा से ज्यादा रन बटोरने की होगी दोनों बल्लेबाजों द्वारा, ताकि एक बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर हो टीम हाजी 11। 121 for the loss of 3 after the completion of 12 overs. 12 done and dusted. 121 is what they managed at the cost of 3, and we'll have to wait and watch. Next 8 overs are going to come 48 legitimate balls. Somebody dropped in a comment and he want to know the names of the 2 commentators. Myself, Manavit Tanveer, alongside me again Sheikh Nazir in the com box, and we're really thankful to you. We're really indebted to your love and support, my dear beloved viewers of JK Sports Time. It's high time to welcome you again and join us in numbers and catch all the fun, the drama which is continuing here at the center of Khrew Stadium. Is hosting this all important cricket tournament, and we're underway with this all important high voltage encounter. It's KGI taking on Haji 11 in this first match of the day, and John Saab is still conveying a message to the 2 batters out in the middle. It's 121, and he's talking to the 2 batters out in the middle, and he's talking to them. Let's display that great batsmanship out in the middle, and working in that tandem and combo, and that can really set up the tone for the good score. At the moment 121 isn't bad. Up 8 overs remaining, 48 balls are going to come, and they have 7 wickets in the kitty, in the bank. They can really go for full Monty in remaining 8 overs, and I believe that they will definitely love to pile up in excess of 200, and that can really fit, and that can really set the chase in the second innings when KGI will be batting. It will be a high voltage encounter. Time will tell us. It will be early to say that. It will be pretty immature to say that one side will seal the deal and the other side will lose the match. But it will be early to say, to be precise, because the game of glorious uncertainties can change its course from bad to worse, from worse to worse inning, from good to better, from better to best. And this is what we have been witnessing on a cricket field time and again. And I love to throw it out that we have been covering cricket since ages, and I can also say that the evolution does happen, and the evolution in terms of cricket, and since the beginning of cricket on 15th of March way back in 1877, we have seen so many things coming in cricket and happening, some new things, and that's why we use those words when the batsman tends to improvise, going for those scoops or dilly scoop, and we use the word that this is kind of improvisation, isn't? But that one goes beyond the wicketkeeper on that occasion, and both the batters will fetch a single, and that's all. They will get 122 for the loss of 3. We are in over number 13. Ball 1 yielded a single. Let's wait and watch what's going to come your way, our way on ball number 2, Nazir.
123, हालांकि इस गेंद को एक रन पूरा किया, हालांकि वाइड का इशारा था अंपायर द्वारा। तो 123 हो चुका है कुल योग 13वें ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर। अब देखना है किस प्रकार से यहां से बल्लेबाजी होगी, क्योंकि आने वाले 6-7 ओवर में ज्यादा से ज्यादा प्रहार होगा दोनों छोर से बल्लेबाजों द्वारा, और एक संघर्षपूर्ण रोमांचक स्थिति इस मुकाबले में बनी रहेगी। इस ओवर में अगली बार राइट आर्म ये गेंद, और इस बार अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर पड़ने के बाद उछलती हुई बल्ला जरूर चलाया, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ और गेंद सीधे विराम करते विकेट कीपर के दस्ताने में। 13वें ओवर में 123 क्षमा कीजिएगा 123 रन 3 विकेट के नुकसान पर हाजी 11 टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हैं इस निर्णायक मुकाबले में केजीआई के विरुद्ध, और अब तक का 12 ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है। 13वें ओवर प्रगति पर 123 रन बना लिए हैं मात्र 3 विकेट खोकर। इस ओवर में अगली बार राइट आर्म ओवर द विकेट बल्लेबाज के लिए ये गेंद, और इस बार फिर ऑफ स्टंप पर बाहरी किनारा और गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। दर्शनीय स्ट्रोक और 4 रन और खाते में जुड़ते हुए 127 पे जा पहुंचा है स्कोर इस समय हाजी 11 का मात्र 13वें ओवर में। और जिस प्रकार से जबरदस्त प्रहार हो रहे हैं, और महत्वपूर्ण बात यह है मनोहर भाई के विकेट मात्र 3 को अरसे में 7 विकेट हाथ में, तो कोई दबाव की स्थिति यहां पर बल्लेबाजों पे नहीं है, जिसके चलते इस समय दोनों छोर से विस्फोटक बल्लेबाजी होती हुई। Whatever comes bowling side way, batting side should get runs, and they're getting those runs at great ease. We'll have to wait and watch. Fresh over will begin. Here goes the pacer, bowls that one up the inner edge. Will this run down to the boundary? It looks like Phil gives the chase. Will he get to the ball? No, it doesn't. That's a boundary. And the fresh over begins with that boundary up the inner edge. And that goes down to the fine leg boundary for 4. Thank you, Masroor Ahmed Wani, Ibrahim Mushtaq, Shahid Tajamul Ganai, Nazir Ahmed, Wahidul Islam, and Mir Gulzar and others. Thank you for joining us on this all-important cricket match here at Azad Stadium, Khrew. This is KGI taking on Haji 11, the very vital toss won by Haji 11 captain. And he straight away, without any hesitation, decided to bat first. And they are 127 for the loss of 3 wickets were in over number 30. Next ball goes, and the short one outside the off stump. That's a beautiful shot, but straight down to Race Kohli. They're at sweeper cover. Just a single on that occasion. 128 for the loss of 3. This is over number 13. Coming to you live and exclusively through JK Sports Time. And we're trying our level best. We're sweating it out here, and the two teams are sweating it out on the cricketing field here at the center of Khrew. In the meantime, Sahil Khan back on strike, the left-hander. Cam as an opener and is still unbeaten out in the middle, and is keeping wickets intact from his end. He's working on the basics and is playing the ball on merit. He's giving a lot of respect to the good balls. Next ball goes and bows, and on middle and leg wrapped him on the pad. Wanted to swing on to that one. It doesn't get success. It gone beaten on that occasion. Ball wrapped him on the pad. No harm done. It was clearly going very down the leg side. There was day-night between wickets and the body of the batsman. It's 128 for the loss of 3. Over number 13 in progress. There is a backward point. There is cover point, Riyaz Peer. Then one more added to the cover area. Then there is short extra cover and extra cover on the boundary. Long off in place. Long on in place. Mid wicket, Race Kohli is feeling there. And backward Scalag is in place. With this field, next ball coming up to Sahil Khan. Left-hander out in the middle. Goes and bows to... Oh, that's a beauty. That is a wonderful Jaffa. That one all of a sudden arising abruptly of cooling spot. And batsman just manages to keep that one down. And above the abdominal cavity near the rib cage. And he manages to keep that one down and out towards a senior mid-on. A mid-off and a run. Dot ball 10. 13 and 128 for the loss of 3. 13 ओवर समाप्त हो चुके हैं 128 3 विकेट के नुकसान पर 7 ओवर का खेल बचा है। तो ऐसे में इन 42 गेंदों से और ज्यादा रन बटोरने की कोशिश होगी दोनों बल्लेबाजों की। हालांकि उनकी निगाहें जम चुकी है, विकेट के मजाज को परख चुके हैं, तो ऐसे में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए वहां पे बल्लेबाजों की। और दूसरी ओर अगर गेंदबाजी की बात करें तो एक सटीक लाइन और लेंथ के साथ बल्लेबाज को वहां पर मजबूर करना होगा, ललचाना होगा स्ट्रोक्स के लिए, ताकि एक अतिरिक्त जोखिम भरा स्ट्रोक खेलने के बाद एक सफलता जरूर मिले। क्या इसमें सक्षम हो पाते अथवा नहीं, ये देखने वाली बात होगी। 13 ओवर 128 3 विकेट के नुकसान 132 क्षमा कीजिएगा 132 रन 3 विकेट के नुकसान पर 13 ओवर की समाप्ति के बाद निर्धारित 20 ओवर का कोटा, और अब तक का 13 ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है केजीआई द्वारा। नए ओवर की शुरुआत पारी का 14वां ओवर लेकर के रईस कोहली संभवतः
जी ऐसा लगा, लेकिन वे नहीं है। एक और संभवतः गेंदबाजी का परिवर्तन और कुल मिलाकर पारी का 14वां ओवर लेकर के पहली गेंद तिरछे बॉल के साथ इस बार ऑफ स्टंप पर खेला जरूर, लेकिन उस और खिलाड़ी उन्होंने गेंद को फील्ड किया, वहां पर डराया धमकाया बल्लेबाज को सुरक्षित वापस क्रीज में। लियाकत लोन है गेंदबाज, धन्यवाद, और जो कि इस ओवर की अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार। 132 13.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद 132 3 विकेट के नुकसान पर बहुत ही लाजवाब प्रदर्शन रहा है लियाकत का, जो कि हाल फिलहाल के अगर उनके रिकॉर्ड को देखें तो शतक भी इससे पूर्व लगा चुके हैं पिछले मुकाबले में, और बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन उन्होंने किया था। इसी मुकाबले में 100 रन बनाए थे उस मैच में जो कि उनका मुकाबला हुआ था पिछले इस सत्र की। अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर इस समय गेंदबाजी के मोर्चे पे, हालांकि बल्लेबाजी में जिस प्रकार से आज उनको प्रदर्शन करना होगा, आज उनके समर्थक चाहते हैं कि आज एक और आकर्षक समर्थन देखने को मिले, एक समर्थन उनका देखने को मिले, बल्लेबाजी आकर्षक देखने को मिले। क्या ऐसा वो कर पाते हैं अथवा नहीं? फिलहाल गेंदबाजी के मोर्चे पे बने हुए लियाकत, और कुल मिलाकर 132 14वें ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर यह है लेखा जोखा अब तक इस मुकाबले का KGI और हाजी 11 के विरुद्ध। आजाद स्टेडियम क्रू से सीधा प्रसारण JK स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से आप तक पहुंचता हुआ। अच्छी गेंद, हालांकि यहां पर पूरी तरह से छकाया, बल्लेबाज को प्रयास जरूर किया था, विकेट कीपर के हाथ में लगने के बाद गेंद छूटी। रनों की गति में कोई वृद्धि नहीं। 132 14वें ओवर में 3 विकेट के नुकसान पे 7 विकेट हाथ में है, और ऐसे में प्रहार दोनों छोर से दोनों बल्लेबाजों द्वारा एक बड़े स्कोर की ओर अग्रसर ऐसे में टीम हाजी 11 की। Liaquat Loan is bowling at the moment and is trying to keep things tight, but it won't be easy. Next ball, that's a good shot, chipped away. It is fine, the fans does. That's a great shot. A width on offer, a width given, and he says thank you very much. We packed it to perfection, and Liaquat Loan can't keep the batsman calm. That's a great shot and yielded the boundary, chipped away on the offside. It is a great shot to be precise, Nazir. Bowling away outside the off stump. Better is to bowl in that way and bring the ball into the batsman on middle and off or middle and leg. What do you think? जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार यहां पे प्रहार हो रहा है दोनों छोर से, और यहां पर बल्लेबाज को मौका नहीं देना होगा। इस अगली गेंद को खेला हवा में गेंद, लेकिन एक टिप्पा खाने के बाद वहां पर क्षेत्र रक्षक जब तक उसको फील्ड करते हैं सफाई के साथ, हालांकि कलेक्ट नहीं कर पाए, लेकिन तब तक का दोनों बल्लेबाजों ने अपने छोर बदल लिए, तो खाते में और रन जुड़ते हुए लगातार इस समय प्रयास करते हुए। हालांकि यहाँ पे गेंदबाजी की अगर हम बात करें, प्रयास जरूर कर रहे हैं एक विकेट लेने की, लेकिन अभी तक सक्षम नहीं हो पाए हैं गेंदबाज इस साझेदारी को तोड़ने में। 135 3 विकेट के नुकसान पर यह पारी का 14वां ओवर चलता हुआ, और गेंदबाजी इस समय लियाकत के पास। ये गेंद 12 अच्छी गेंद, हालांकि स्ट्रोक जरूर खेला, लेकिन स्ट्रोक में ताकत नहीं दे पाए। निचले सिरे पे लगने के बाद वही पास में अपने फॉलो थ्रू में फील्ड के बगैर किसी रन के प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर एक विकेट की आवश्यकता है, अन्यथा धीरे धीरे से जिस प्रकार से ये दोनों बल्लेबाज प्रहार कर रहे हैं, एक बड़ा लक्ष्य होगा विपक्षी टीम के सामने आने वाले समय में। अच्छी गेंद, इस बार टप्पा खाने के बाद उछलती हुई, अपेक्षा से ज्यादा उछलती हुई, बल्ला जरूर चलाया, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ, गेंद विराम करते विकेट कीपर के दस्ताने में। ओवर पूरा हुआ। 14 ओवर की समाप्ति के बाद 136 3 विकेट के नुकसान पर हाजी 11 KGI के विरुद्ध। 14 overs done and dusted. 136 for the loss of 3 wickets, and this pair out in the middle is proving its worth, and they are still proving their mettle the way they're batting at the moment. They're really making things bit difficult and bit tougher out in the middle for the bowling team, and KGI need to be disciplined with the ball, and their bowlers need to display that character for what they have been brought on today. But at the moment it's 136 after the completion of 14 overs, 6 overs remaining. It's 138 to be precise. Now the correction comes in from the scorer. It's 138 for 3 after 14 overs, and it means there are 6 overs at their disposal, and I believe that we are in for some fireworks from here on, because they have 7 wickets in hand and 42 balls. 36 balls will mean quite a lot, and Riaz Kacha walks into the middle. There will be a message for the two batters how to carry on from this very crucial juncture till the last ball. Nazir, 138 14 ओवर पूरे हो चुके हैं, 3 विकेट गंवाए हैं, 7 विकेट हाथ में, तो आखिरी 6 ओवर आने बाकी हैं। कितने रन बटोरेंगे इन 6 ओवर से, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि यहां पर अगर बात करें 7 विकेट हाथ में है, ये अच्छा कहा जा सकता है
हाजी 11 के दृष्टिकोण से, क्योंकि जिस प्रकार से विकेट उन्होंने बहुत कम खोए हैं, तो ऐसे में ये एक चिंता का विषय होगी केजीआई के लिए। लेकिन यहां से शुरुआती ओवर्स की अगर हम बात करें कि शुरुआत में 1-2 विकेट जरूर मिले थे, लेकिन उसके बाद लगातार प्रहार दोनों छोर से दोनों बल्लेबाजों द्वारा, जिसके चलते एक दबाव की स्थिति जो बनी थी उससे छटती हुई, उससे बाहर निकलती हुई इस समय दोनों बल्लेबाजों की जोड़ी। तो फिलहाल 14 ओवर पूरे, पारी का 15 ओवर लेकर के तैयार गेंदबाज इस छोर से, और देखना है यहां से क्या सूचना रहेगी दोनों बल्लेबाजों के लिए, क्या रणनीति रहेगी, क्या योजना रहेगी, और किस प्रकार से वो यहां से बल्लेबाजी करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। एक बार फिर सभी व्यूअर्स से निवेदन होगा कि ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करना ना भूलें, जुड़ जाइए जेके स्पोर्ट्स टाइम के साथ और मजा लीजिए इस आकर्षक रोमांचक मुकाबले का, जो कि इस समय ख्रू प्रीमियर लीग 17-3 वर्ष 2022 के अंतर्गत आजाद स्टेडियम ख्रू से सीधा प्रसारण आप तक पहुंचता हुआ। 14 ओवर पूरे, 138, 3 विकेट के नुकसान पर नए ओवर की शुरुआत। पहली गेंद लेकर के राइट आर्म ओवर द विकेट, बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए जबरदस्त प्रहार ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद को, लेकिन इस बार सफलता नहीं मिली और गेंद सीधे विराम करते विकेट कीपर के दस्ताने में। 14.1, 138, 3 विकेट के नुकसान पर धीरे धीरे से एक बड़े लक्ष्य की ओर इस समय अग्रसर टीम हाजी 11। 138 for the loss of 3. Mubashir is operating, and on strike will be Sahil Khan, the left-hander. He's still batting here at the sun. And next ball, once again, swing and a miss. Well, it has been the case with this man. He's unable to operate time and again. He has been batting since ball 1, the very first over, which was bowled mad and over by Adil Lapti. He bowled in mad and over to this man. He has been batting since 14 overs and is unable to latch on to those freebies, freebies and half trackers outside the off stump. You need to cash on at the moment. You need to change his gears. Next ball, that's driven, but straight to fielder will have to wait and watch. Will this be caught up? Does, just a single. And with that single, score moves to 139 for the loss of 3. Over number 15 in progress. Mubashir is operating, Mubashir is bowling, and this is over number 15 we are in. And we definitely love to thank our proud sponsors, Arco Fenestration, Anthem Sports India, Fashion Feasta, Real Estate Pampur, Shining Star Pampur, and MHA Multi-Fashion Branded Store, Agri Clan Magam. In the meantime, Mubashir will be bowling to right and a no-slip third man back with a point, cover point, extra cover, short extra cover, mid-off. And that's a good shot, that's gone all the way for 6. This is absolute carnage. Swept to hard, and he was trying to slog that one, but in the end it was a sweep shot all the way down to the boundary. 6 more, 145 for the loss of 3. Over number 15 in progress. Mubashir, what can he do? That is the beauty of the batsman displayed on that shot, and just whiffed away over Skalak for 6. We'll be waiting for the next one from Mubashir. 145 on bowl, 15th over in progress. Mubashir goes and bows, and once again in the same direction, but this time backward up sky, down to the boundary for 4. 149. Two half trackers, both have been put away, Nazir. One through that Skalak region and one through that backward Skalak. Better is to bowl outside the off stump and keep the batsman under check. The way you bowl two deliveries, half trackers and puller, little tad pullers, and allowing the batsman break free with great ease, that is in great side. बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं। हालांकि मुबशर यहां पर परिवर्तन अपनी गेंदों में जरूर करते हैं। गति में परिवर्तन किया तो 6 रन, और इस बार लेग स्टंप से थोड़ी सी बाहर फेंकी तो उस पे 4 रन। तो कहीं न कहीं अभी तक सफल नहीं हो पा रहे हैं अपने उस मिश्रण में। इस बार फिर उसी दिशा में एक और ऊंचा लंबा स्ट्रोक गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। तो इस छक्के के साथ ही 150 रन पूरे होते हुए 155 जा पहुंचा है 15वें ओवर में। मुबशर समझ नहीं पा रहे हैं किस प्रकार से गेंदबाजी की जाए इस बल्लेबाज के विरुद्ध। हालांकि एक महत्वपूर्ण ये बात यह है कि 7 विकेट हाथ में है, तो ऐसे में दबाव की स्थिति यहां पर बल्लेबाजों पर नहीं, जिसके चलते इस समय विस्फोटक बल्लेबाजी दोनों छोर से होती हुई। 155 रन 15वें ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर। यह है लेखा जोखा अब तक का हाजी 11 का, अगर बात करें केजीआई के विरुद्ध। Absolute carnage here at the center. Some great batting, some fireworks, and these two are really, especially this man who has put on jersey number 2, he is trying to set things ablaze, but there was something wrong with the bowler too. Little error in length and allowing the batsman to break free, and he was just waiting for those freebies and invitations, and he grabbed both opportunities with both the hands and worked away both the shots down to the onside boundaries for 4, and you can easily send the ball out of the park on this portion that has got a wonderful carry. And fresh opening in the very first ball of the outside edge.
will carry down to the third man boundary for 4. 159 on the board, the very first ball. Nothing wrong with the ball there, Nazir. But that was just, he was trying to lunge onto the front where he came charging down the track, shimmies down the track, off the outside edge, boundary fetched, 159. बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन अब तक देखने को मिला है बल्लेबाजी द्वारा। लगातार इस समय रनों की बरसात होती हुई स्कोरबोर्ड को गतिशील रखा है दोनों बल्लेबाजों ने। एक दाएं हाथ का बल्लेबाज और एक बाएं हाथ का बल्लेबाज। वापस स्टंप से बाहर जगह मिली, कोई मौका नहीं और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। तो लगातार प्रयास हो रहे हैं और इस समय जिस प्रकार से बॉडी लैंग्वेज है क्षेत्ररक्षकों की, और ऐसा माना जा रहा है कि बिल्कुल निराश हताश है क्षेत्ररक्षक, और जिसके चलते इस समय विस्फोटक बल्लेबाजी दोनों छोर से, चाहे वो बाएं हाथ का बल्लेबाज चाहे दाएं हाथ का बल्लेबाज, और एक आकर्षक और विस्फोटक मनोरंजन होता हुआ क्रिकेट के समर्थकों और दर्शकों का। Absolutely right. What an innings. What an enterprising innings continuing here at the center. Now Sohail Khan joins the party with those 2 big hits out of the park. He's on strike. Third ball. Very out. Look at that one, Nazir. That's gone all the way. 5 wides. We'll have to wait and watch. Yeah, exactly. 5 gifted runs. And that's gonna add insult to the injury. What he was trying to do. There is no need to experiment. And look at that experiment. That went way away from the trim line. 5 wides. And score moves to 170 for the loss of 3. We are in over number 16 of the match. We'll have to wait and watch. Azad Stadium Crew hosting this 3rd edition. And this is the all-important cricket match underway. KGI locking horns with Haji 11. At the moment, it's Haji 11. They're reaping the harvest. They're really on cloud 9. Especially their batting. They're going hammer and talk. They're going distant. And they're taking full toll of every bad ball. And look at that one. But straight to short mid-off and a run. It's a dot ball. And every dot ball is worthy of a goal at the moment. That they need to chip in with dots. And that can really make the match out of it. And that can really bring them back on track and back into this one. And that's a freebie. What a shot. Left to you, beauty. Whiffed away, no need to run for those, and no one is going to change it to its original position, and no one is going to move from its original field position. And look at that one, that finds the boundary in style. That was extra cover drive, and that yielded the boundary. 174, its running boundary is here at the centre, and Sohail Khan is on strike, and Liaquat, the man who scored 100 in the last match here, He's costing his side very much. Oh, that's in the air. And other lefty, the man, the safest man on the park, holding on to the ball, and wicket number 4 tumbles. But belatedly they got rid of this man. Partnership finally broken, but it's too late to me. 174 is already raised on the board. लंबी प्रतीक्षा के बाद अंततः ये सफलता जरूर मिली, लेकिन तब तक उस स्थिति में ला खड़ा कर दिया है इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने, जहां से एक बड़े पहाड़ जैसे लक्ष्य की ओर अग्रसर है टीम हाजी 11 की। अंततः 4था विकेट मिलता हुआ और करीब 175 रन है इस समय कुल योग। 4 विकेट के नुकसान पर हाजी 11 जो कि पारी का 16वां ओवर प्रगति पर है, और धीरे धीरे से बेहतरीन लाजवाब विश्वसनीय प्रदर्शन अब तक देखने को मिला है इस आजाद स्टेडियम क्रू से। सीधा प्रसारण जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से सभी व्यूअर्स तक पहुंचता हुआ स्वागत करना चाहेंगे। अभिवादन, अभिनंदन और अपना प्यार और विचार देने के लिए, हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए इसी प्रकार से आपके समर्थन और सहयोग की आवश्यकता रहेगी जेके स्पोर्ट्स टाइम को। तो स्थिति यह है कि 4था विकेट गिरा है, काफी लंबा इंतजार करना पड़ा यहां पर, और इस समय कुल मिलाकर स्थिति यह है कि 4था विकेट 16वें ओवर में 177 पे, और लक्ष्य बहुत बड़ा होता हुआ धीरे धीरे से अगर विकेट के चारों ओर नजर दौड़ा जाए, स्टेडियम के चारों ओर दर्शक का खचाखच मैदान बना हुआ और आकर्षक मुकाबला इस समय बीच मैदान में, क्रिकेट के समर्थक और दीवाने प्रेमी इस मुकाबले का आनंद लेते हुए जो समय बीच मैदान में केजीआई और हाजी 11 के विरुद्ध चलता हुआ। हाजी 11 ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते अब तक 16वें ओवर में 177 रन बना लिया है मात्र 4 विकेट के नुकसान पर, और करीब 200 का जो एक लक्ष्य है, 200 का एक आंकड़ा है, संभवतः उसको छूने की आवश्यकता में है इस समय हाजी 11 की टीम, और संभव भी है मनोहर भाई जिस प्रकार से मात्र अभी भी 33 रन दूर है, लेकिन कुल मिलाकर 24-25 गेंदें आने बाकी हैं। तो ऐसे में 200 का एक विशाल लक्ष्य होगा, एक मनोवैज्ञानिक दबाव की स्थिति होकर दूसरी पारी में आसान नहीं रहेगा उस लक्ष्य को भेजना। Won't be easy. Anything beyond 200 will definitely mean it's going to be an uphill task for the team which will be batting second. That's a good shot, keeps that one out towards the sweeper of cover area, and both the batters will fetch a single, and with that single score moves to
and one of our scorers is unable to update it on the big screen there. But in the meantime, we'll have to wait and watch. That ball yielded a single, and with that single, there is addition in the score. It's 173 for the loss of 4 wickets. We are in over number 17 of the innings, and we'll have to wait and watch how they will be battling it out, how they will be sweating it out in next 3 overs. It will be interesting to see, but at the moment it seems to be a batting side. They have really been able to seize the initiative. They're really on top at the moment, and Haji 11, they're looking and eyeing for a big score here, and only the time will tell us. Can they pile up in excess of 200? Only the time will tell us, and it will be early to say that. One side will seal the deal and the other side won't be able to make an impact, because this is the game of glorious uncertainties. Until the last ball is non-ball, we can't say anything. But at the moment, short pause in the game. In the meantime, I got an opportunity to take you through the playing 11 of both the sides. Riaz Ahmed, Ishfaq Ahmed, Rail Yunus, Rafi Yunus, Sohail Khan and Azim Lepti, and Jamid Lepti, Zohur, Junaid, Samir, John Malik and John Saab. And going through KGI side, they got Ray Kohli is operating. That's a good ball, keeps that one out towards the cover point for no run. It's a dot ball, and every dot ball is like a gold dust here, and every dot ball will mean that batting side need to compound their agonies, and the fielding side will fancy their chances. Next ball, it's a dot ball, but all beaten up. Phil gives the chase. Will he be able to cut it up? No, it doesn't. It goes straight to the long stop boundary for 4. And with that, boundary score moves to 178 for the loss of 4. We are in over number 17 of the match. And that was a bad approach by wicketkeeper. All beaten up. Be the batsman, be the wicketkeeper. Down to the boundary for 4. And every run will mean that fielding side will have to compound their agonies. And it won't be easy to bounce back at this crucial juncture. And if they manage to chip in with a wicket or 2 here, that will definitely make things a bit easy and easier out in the middle for bowling team. Ball goes and bows, and batsman shuffling across, wanted to go cross the line, doesn't succeed in the end, dabbing it in front of point for no run. It's a dot ball. लगातार प्रयास हो रहे हैं दोनों छोर से, हालांकि इस समय 178 रन है और इस बार अच्छी गेंद, फिर वहां पर सफलता नहीं मिली। प्रयास जरूर कर रहे हैं बल्लेबाज, लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि आखिरी के कुछ ओवर बचे हैं। हालांकि 6 विकेट हाथ में है, तो ऐसे में इस प्रकार की बल्लेबाजी की आवश्यकता रहेगी। दोनों छोर से क्रिकेट के समर्थक भी यही चाहते हैं, भले ही परिणाम कुछ भी हो, लेकिन एक संघर्षपूर्ण मुकाबला देखने की मुद्रा में तमाम क्रिकेट के प्रेमी, समर्थक और दीवाने बैठे हुए इस मुकाबले का आनंद लेते हैं। हाजी 11 इसमें 17वें ओवर में 178, 4 विकेट के नुकसान पर केजीआई के विरुद्ध। इस ओवर में अगली बार छोटे बॉलर रनअप के साथ ये गेंद, और इस बार इसको उठा दिया, हवा में है गेंद, ऊंचा लंबा स्ट्रोक, उस और खिलाड़ी जा रहे हैं, लेकिन गेंद एक टिप्पा खाने के बाद उनसे पहले छिटकी, और जब तक उसको फील्ड किया जाता पर्याप्त समय था दोनों बल्लेबाजों के पास। 2 रन लेने का 180, 17वें ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर यह है लेखा जोखा इस मुकाबले का। हाजी 11 की टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हैं। निर्णायक मुकाबला आजाद स्टेडियम ख्रू से सीधा प्रसारण जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से आप सभी व्यूअर्स तक पहुंचता हुआ। बने रहिए हमारे साथ, अपना प्यार और विचार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार से आपके प्यार और विचार की आवश्यकता। बेहतरीन स्ट्रोक, उतना ही बेहतरीन कैच, अंतरराष्ट्रीय सर की याद दिलाते हुए, और निश्चित तौर पे जितने भी प्रशंसा की जाए वहां पर क्षेत्ररक्षक की उतने कम। कुल मिलाकर 5वां विकेट गिरता हुआ 180 पे 5, और क्या कहना है इस क्षेत्ररक्षक का, क्या लाजवाब कैच पकड़ा है, और जिसके चलते 5वें विकेट को किया चलता हाजी 11 का। 180, 5 विकेट के नुकसान पर 17वां ओवर इसमें प्रगति पर अच्छी खासी दर्शकों की संख्या इस मुकाबले का आनंद लेती हुई। ख्रू प्रीमियर लीग एक विश्वसनीय लोकप्रिय लीग अगर बात करें इस कश्मीर राज्य की, और जिस प्रकार से आज इसका 3रा सत्र वर्ष 2022 के अंतर्गत, हालांकि दूसरे चरण में इस लीग का जो प्रायोजन हुआ है इस समय बीच मैदान में, आज दिन का कुल मिलाकर पहला मुकाबला जो कि हाजी 11 और केजीआई के विरुद्ध चलता हुआ धीरे धीरे से उत्साहता
और उत्सुकता देखने को मिल रही है यहाँ पर क्षेत्ररक्षण में, क्योंकि 5 विकेट चटकाने के बाद हालांकि स्कोरबोर्ड पे एक बड़ा लक्ष्य लग चुका है। 180 रन अब तक बन चुके हैं, करीब करीब 179, 5 विकेट के नुकसान पर 17 ओवर पूरे हो चुके हैं। 3 ओवर का खेल बचा है। 18 गेंदों से कितने और रन बटोरने की कोशिश होगी दोनों बल्लेबाजों की, और करीब करीब जैसा कि इससे पूर्व भी इस बात पे टिप्पणी हुई थी कि 200 का लक्ष्य छूना चाहिए यहाँ पर टीम हाजी 11 की। खूबसूरत वातावरण, क्रिकेट के अनुकूल और अच्छी खासी मुद्रा में दर्शक आए हुए इस मुकाबले का आनंद लेते हुए। 17 ओवर में 179 रन, 5 विकेट के नुकसान पर यह है अब तक का लेखा जोखा। और नए ओवर की शुरुआत होती हुई पारी का 16वां ओवर लेकर के तैयार, 18वां क्षमा कीजिएगा 18वां ओवर, 17 ओवर पूरे 179 पे 5। और यहां से क्या रणनीति रहेगी, क्या योजना रहेगी, ये देखने वाली बात होगी दोनों बल्लेबाजों की। नए ओवर की शुरुआत, 17 ओवर 179 पे 5। और देखना है किस प्रकार से यहां से बल्लेबाजी करेंगे। 17 ओवर समाप्त, 179, 5 विकेट के नुकसान पर। आगे का विवरण देने के लिए साथी कमेंटेटर मुझे बता दीजिए। 179 for the loss of 5 here in over number 18 of the match. 17 done and dusted. We've seen the back of 4 of the batters. And it comes down to these two batters out in the middle. One is Jahangir Malik and I don't know the other guy, his name properly. But at the moment, Adil Apti brought back into the attack. Over number 18. Ball 1 goes and bows, and what a shot! The very first ball yielded a boundary. Cross-batted on middle and leg. Need to learn the basics and the tactics, how to bowl under certain circumstances. At the fag end of the innings, we're into the death service and into the death. The first ball being welcomed with that boundary. Cross-batted, yielded a boundary. Score moves to 183 for the loss of 5 wickets. This is Khrew Premier League edition 3rd. Adil goes and does. Oh, yes, castled him, cleaned him up. Bamboozled, and the middle stick is approached. A bailer sent for the toss. It's wicket number 6 going down here at the Sanchi. It's Adil lefty among the wickets with that beauty. Coming into the batsman once again, playing cross the line and unable to offer any kind of short. Ball goes to his batting stance. And there goes wicket number 6 at the score of 183. Then a 6 down at the score of 163. And we've seen the back of 6th one. It's 83 for the loss of 6. Over number 18 in progress. Haji 11 batters need to bat out their allotted quota of 20 overs. And if they manage to bat out till the last ball, I believe 200, even beyond 200 is possible from here on. And that will definitely put them in ascendancy, because anything beyond 200 will mean it will be a lot of pressure on KGI when they will be chasing it. एक 183 क्षमा कीजिएगा, 6 विकेट के नुकसान पर यह है अब तक का लेखा जोखा। और करीब करीब 18 ओवर संभवतः पूरे हो चुके हैं। ये 18वां चल रहा है ओवर इस समय प्रगति पर है और देखना है इसके तुरंत बाद 2 ओवर का खेल बचा है तो किस प्रकार से यहां से कितने रन और बटोरेंगे दोनों बल्लेबाज, ये देखने वाली बात होगी। 183, 6 विकेट के नुकसान पर इस ओवर में अगली बार बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए दौड़ना शुरू किया। राइट लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट संभवतः आदिल लेफ्टी, उनकी ये गेंद और इस बार लेग स्टंप पर मोड़ा उसको, शानदार क्षेत्ररक्षण वहां पर और निश्चित तौर पे यहां पे कुछ रन बचाए अपने लिए अपनी टीम के लिए और 1 रन और खाते में जोड़ता हुआ 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 184। 6 विकेट के नुकसान पर आदिल लेफ्टी हैं गेंदबाज
प्रभावशाली गेंदबाजी देखने को मिली है। हालांकि विकेट अभी तक उनके खाते में संभवतः एक ही गया है, लेकिन जिस प्रकार से आज उन्होंने गेंदबाजी की है लाजवाब कमाल। 184 6 विकेट के नुकसान पर आदिल लेफ्टी इस ओवर में अगली बार दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए बाएं हाथ से उनकी ये गेंद, और इस बार अच्छी गेंद, हालांकि समझ नहीं पाए, फिर मोड़ना चाहते थे उस चौड़ उसका लेग अंपायर के बाईं ओर, लेकिन सफलता नहीं मिली। गेंद वही पास में उड़ के बगैर किसी रन के 184 6 विकेट के नुकसान पर ये 18 ओवर संभवतः पूरे हो चुके हैं। बाकी अथवा नहीं, जी हां, और 184 6 विकेट के नुकसान पर उसके तुरंत बाद 2 ओवर का आना बाकी है। अच्छी खासी क्रिकेट के समर्थकों की संख्या इस मुकाबले का आनंद देती हुई चारों ओर जहां पर भी नजर दौड़ाई जाए वहां पे क्रिकेट के समर्थक, दीवाने और प्रेमी। और हाल फिलहाल में जो इतना खासा ज्यादा रुझान जो हाव भाव क्रिकेट की ओर देखने को मिला है जम्मू कश्मीर राज्य में, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस ओवर में अगली बार लेफ्ट आर्म ये गेंद, और इस बार ऑफ स्टंप पर जगह मिली, वहां पर मिस फील्ड और गेंद सीमा रेखा से बाहर। 4 रनों के लिए 4 रन और खाते में आते हुए और स्कोर बढ़ता हुआ 187 6 विकेट के नुकसान पे 18वां ओवर इस समय प्रगति पर, और 187 रन बना लिए हैं। केवल 13 रन दूर है 200 के उस विशाल छूने के लिए, और उसी मुद्रा में इस समय जबरदस्त प्रहार होते हुए दोनों बल्लेबाजों द्वारा। पर आदिल लेफ्टी है गेंदबाज। Next lefty goes and bows and pulling that one in the air. Will this evade the failure? But no, in the meantime both the batters will fetch a single. That's all they will get, just a single out of it. 184 for the loss of 6 wickets over number 18. Done and dusted. 18 gone. 1 for the loss of 6 wickets. 12 balls are going to come. We'll have to wait and watch how many runs they will be fetching. 12 balls. You can drop in your comments and you can write to us how many runs they will be fetching out of remaining 12 balls. Do write us. What do you think? Will 200 be the safe score for Haji 11 in this all-important cricket match? And do you think that KGI can chase 200? Nazir, we're asking our blood viewers. You can write to us all these things. You can mention in comments, and you can drop in your invaluable comments, and you can write to us whether 200 will be the pass score, or will this team be able to get to 200 mark with ease. It will be a big cost and take for all of us, and it won't be easy to answer until the last ball is not bowled. 2 ओवर का खेल बचा है 189 6 विकेट के नुकसान पर, और इन 2 बचे हुए ओवर से कितने रन और बटोरेंगे ये दोनों बल्लेबाज हाजी 11 के, ये देखना होगा। फिलहाल 189 रन बना लिए हैं 6 विकेट के नुकसान पर, 4 विकेट हाथ में, और पारी का 19 ओवर लेकर के तैयार गेंदबाज उस चोट से। फील्ड में थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए, और अब तैयार गेंदबाज, और सामने है दाएं हाथ का बल्लेबाज। और क्या रुझान रहेगा, क्या रणनीति रहेगी? पहली गेंद ऑफ स्टंप पर, अच्छी गेंद, हालांकि बल्ला जरूर गवाया, वहां पर नॉन स्ट्राइकिंग शॉट से काफी निकल गए थे आगे, रन लेने की कोशिश, लेकिन वहां पर मना किया और वापस सुरक्षित भेजा कर इसमें बगैर किसी रन के। 18.1 189 6 विकेट के नुकसान पे ये 19 ओवर प्रगति पर दूसरी गेंद लेकर के बिल्कुल छोटे बॉलर रनअप के साथ, इस बार जबरदस्त प्रहार, कोई मौका नहीं, और गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। जैसे ही गेंद ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर मिली और उसको निकाल दिया, अपने आप को संतुलित करते हुए 6 रनों के लिए 195 जा पहुंचा है 19वें ओवर में। 18.2 के बाद 195 6 विकेट के नुकसान पर हाजी 11 इस समय बड़ा लक्ष्य, विशाल लक्ष्य कहना चाहिए क्रिकेट की भाषा में, इस समय एक बड़े स्कोर की ओर अग्रसर दोनों बल्लेबाज। 195 पहुंचा है 19वें ओवर, अभी 4 गेंदें बाकी है, तो ऐसे में 200 से अधिकतम का लक्ष्य होगा। यदि बात करें इस मुकाबले की, बेहतरीन लाजवाब पारियां देखने को मिली हैं आज अगर बात करें हाजी 11 द्वारा, और खराब गेंदबाजी का प्रदर्शन, हालांकि 6 विकेट जरूर चटकाए हैं, लेकिन स्कोरबोर्ड पे एक सम्मानजनक, एक विशाल लक्ष्य लग चुका है 195 6 विकेट के नुकसान पर। फील्ड में थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए वहां पर गेंदबाज, और देखना है अब किस प्रकार से क्या आक्रमण रहेगा यहां से गेंदबाज का। 195 6 विकेट के नुकसान पर आजाद स्टेडियम क्रू से सीधा आप तक पहुंचता हुआ अगली गेंद, इस बार अच्छी गेंद, फिर अपने आप को संतुलित करते जगह बनाते गेंद को निकाला, लेकिन उस और खिलाड़ी है तैनात, उनको भेद नहीं पाए, और 1 रन और खाते में जोड़ता हुआ 196 रन 18.3 के बाद 6 विकेट के नुकसान पे।
196 for the loss of 6 over number 19 in progress. Next ball coming up. Batsmen getting ready. They are sweltering it out under the sweltering conditions here at the center. They're sweating it out. They are fighting it out. And they're giving everything to the game of glorious uncertainties at the moment. It isn't easy to bat under scorching heat, feel under certain circumstances and under the given conditions of where the next ball. Oh, that's a good shot. That's gone all the way. 6 more. And before the umpire will signal, I love to throw it out. That's gone all the way. Straight hit over the bowler's head for 6. It's back-to-back sixes and 200 comes up. 201 on the board for the loss of 6. And that was a wonderful shot. Half pull, half punch. Straight down the ground for 6. Next ball goes and goes. That's in the air. Will this be cut off? Filler trying his level best. Gets to the ball, does the mop up. Send us in the quick return. The two batters settle for a single. 203 for the loss of 6 over number 19 in progress. 203 6 विकेट के नुकसान पर यह पारी का 19वां ओवर संभवतः आखिरी गेंद लेकर के तैयार है। गेंद और बाहर ऊंचा लंबा स्ट्रोक और गेंद दर्शक बीरगांव से बाहर 6 रनों के लिए एक और जन्नतेदार स्ट्रोक और छक्के के साथ ही पारी 19 ओवर की समाप्त। 210 रन हो चुका है इस समय कुल योग। 19 ओवर की समाप्ति के बाद 6 विकेट के नुकसान पर आखिरी 6 गेंदें आनी बाकी। निर्धारित 20 ओवर का कोटा और क्या रोमांचक स्थिति समय इस मुकाबले की बनी हुई। बेहतरीन लाजवाब प्रदर्शन और लक्ष्य 210 तक पहुंचा है और अभी भी 1 ओवर का आना बाकी है। तो कहीं ना कहीं एक विशाल लक्ष्य और दूसरी पारी में जब इस लक्ष्य का पीछा करेगी केजीआई की टीम तो आसान नहीं रहेगा इस दूसरी पारी को भेदना। Now it will be a difficult task, an uphill task in chasing a memo total against Haji 11. Won't be easy here at the center of Khrew. It's going to be an uphill task and their bowlers are really allowed the batting side to seize the initiative, to seal the deal, and they are really piled up a big score in excess of 200 and they will still manage, they will definitely love to fetch 15 plus odd runs and that will definitely take them to near about 225, 230. And that means KGI will be under the serious hammer and pressure from ball 1 till 20th over, and it won't be easy for their batters to come in and go hammer and talk from the very ball 1. And now they will be they need their batters when they will come on to bat, and they will need to change the gears from ball 1, and they can't offer dot balls, and too many dot balls will mean they're out of the competition and they won't be able to make any sort of comeback in this event. And if they want to stay alive, they need to go hammer and tonk from ball 1. Next ball, that's a dot ball of the fresh over. First ball ended up a dot and we'll have to wait and watch. 5 balls remaining. Ball number 2 coming up. Right slip in place, gully in place, backward a point, extra cover short, extra cover long off, long on, mid wicket and a square leg in place. Second ball to right hander goes away from us and goes way outside the off stump. What a shot, and that's gone over cover point for 6. What a shot. Nazir goes inside out. There was a time when nobody were able to send the ball out of the park in that very direction. There were few batters in international arena that was believed to be the rare breed of batters, Mohammad Yusuf, Rahul Dravid and others, but he has joined that fan club, that fab club, but at the moment we can't compare him with that sort of talent and quality, but still it is something which we can call that it's quite some achievement. And that's a good shot. Horizontal blade comes into play. Oh, sloppy fail. It's because of that turf on that occasion, the ball hitting the turf and bouncing all of a sudden. And John Saab is rejoicing the moment. He says he is off-field around the park, but that's a boundary. Nonetheless, every run will be a greater agony for team which is bowling at the moment. Next ball from KGI bowler outside the off stump, and Summer does well padding that one. Sent in the quick return. Shot for run out and umpire raises the finger. 7th one goes down. All of a sudden they were cautious, and again as the runner play was in the back of 7th one.
सातवां विकेट वहां पर गंवा चुकी है टीम, दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट होकर पवेलियन लौटते हुए। हालांकि 200 और करीब करीब 20-22 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं 7 विकेट के नुकसान पर, लेकिन ऐसे में विकेट का कोई महत्व नहीं है। और आज मनोहर भाई, मेरा एक प्रश्न आपसे रहेगा, एक टिप्पणी में जरूर करना चाहूंगा एक बात स्पष्ट अपने सभी व्यूअर से भी, कि जो आज प्रश्न बल्लेबाजों ने पूछे हैं आज 11 के KGI के गेंदबाजों से, और उसका उत्तर आज बल्लेबाजों को देना होगा। Absolutely, it's down to the now batters, and their bowling, their batting line need to bat out of their skins, and they need to live up to their expectations today. Anything beyond 200 won't be easy. Now they have in excess of 210 on the board. It won't be easy for KGI, and from ball one they need to go hammer and tonk. They need to go distant, and they need to go for the full Monty, and it's only possible if they start going all guns blazing from ball one, Nazir. बहुत ही लाजवाब विश्वसनीय प्रदर्शन रहा। हालांकि 7 विकेट जरूर गंवा दिए हैं, लेकिन एक बड़ा लक्ष्य इस समय KGI के सामने, करीब करीब 200 और 22-23 रन बना चुकी है, और ऐसे में लक्ष्य को भेदना दूसरी पारी में आसान नहीं रहेगा। हालांकि कुछ गेंदें बची हैं इस पहले पारी के आखिरी ओवर की, और लेकर के तैयार राइट आर्म ओवर द विकेट। ये गेंद उस पर जबरदस्त प्रहार, कोई मौका नहीं, और गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। तो दर्शनीय स्ट्रोक, लगातार चौकों और छक्कों की बरसात होती हुई एक और चौका इस समय कुल योग बढ़ाता हुआ करीब करीब 225 पे जा पहुंचा है। इस समय आखिरी ओवर पारी का, संभवतः ये आखिरी गेंद होगी इस 20वें ओवर की, जो कि आखिरी ओवर पारी का चलता हुआ 224। एक बार फिर इस ओवर में अगली बार ये गेंद, और इस बार फिर ऑफ स्टंप पर अंतिम समय में उसको खेला जरूर। 1 रन पूरा कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज, 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए जाना चाहेंगे, लेकिन मना किया वहां पर। और निश्चित तौर पे इस प्रकार से पारी समाप्त हुई, पहली पारी समाप्त 20 ओवर में 200 और 24 रन बने हैं। 224 7 विकेट के नुकसान पर 225 रनों का विजयी लक्ष्य इस समय KGI के सामने। Yes.